I'm over the moon that the election is finished, and now we can focus on fun stuff like cricket. So this is a great time. You and me both, Ali bhai. I was election was harming every part of my life, so I'm really glad. As Like someone this. who hates politics, I'm over the moon that it's over now. चलिए जी brief introduction साकिब भाई तो हमारे साथ हैं for viewers साकिब भाई हैं हसी फारूकी and Kani just officially Kani is now part of our core Relukata team, so just to let everybody know, so we are from three, we are now four Relukatas. अली भाई बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें करने की हैं, and these three so I'm mostly the host. These three are more hardcore PSL people who will have grilling questions for you, I'm sure. Great, लेकिन great, love it, love it. Always love facing some bouncers. before going into that, आप जो लास्ट ईयर हमारी आपसे बात हुई थी, तकरीबन साल ही हुआ है इस बात को, तो उस वक्त रिमेंबर यू हैड प्लान्स कि जब नई फ्रेंचाइज शुरू होगी तो आपने एक एस करके एक फ्रेंचाइज जो है वो लेनी थी, बनानी थी, तो you had plans, big plans for that. Now you're back due to some circumstances. If you don't mind going into it, okay. Through these unfortunate circumstances की वजह से how your uncle, just your uncle, he's passing, and then you have to come in into circle. So उसके बारे में कुछ बताएं. How was the sequences when, and again, our condolences on your uncle's demise, but how did it all come through? Thank you, guys. Thank you. Obviously, it was a very difficult time for everyone in the family, obviously. But I think regarding Multan Sultans, it was a it was a it was a interesting time to take over, because all the dynasty that had been built and had reached so much success in the past 4 years, 3 finals, 1 trophy, highest percentage of wins. So at that time, there was this dynasty was already coming to an end. So, for example, we had Andy Flower had already mentioned that he's probably leaving next year because he can't do the Lagatar ILT20, PSL, and then IPL. So he had already planned, okay, this is going to be, I can't do this. So Andy Flower is going to be leaving. उसके अलावा the year before I took over, in the previous year, Heather Azhar, who obviously been part of Multan from the beginning, he was part of Multan before we even took over. So he had already spoken to another team the year before and was leaving. My uncle kept him for another year. So he was already thinking about leaving. उसके अलावा some of the players also had plans, and they wanted a new start. So when we took over a team that was in complete disarray. So abhi bhi agar dekhein, if you look at the team now, I know people feel, they have high expectations for Multan, and the team we built is fairly good. Expectation nahi hai. But people need to understand that this team is in complete ये complete एक different team है जो पिछले 4 साल से चलती आ रही है. As an example, if you look at our top six batting, Sean Riley wanted to leave, and he wanted to go back to Quetta, so he was gone. Miller's not coming. Tim David's not coming. Um, Sean was offered captaincy, so obviously he wanted to go as well then. So of all our standard batting heavy team suddenly was no more. And this is before we even took over that this was happening. This is before the draft, is before any of this. So that now, and then obviously जो draft picks available थे, none of them had like for likes available in the draft. So then we had to see कि अब क्या करना है. And another big problem was कि हमारे जो अपने bowlers हैं, अब्बास अफरीदी, सानुल्लाह, who are both emerging players, दोनों अब emerging नहीं रहे. अरफात मिनहास भी हमारा जो player था वो भी emerging नहीं रहा है, वो gold हो गया. Ihsanullah injured हुआ है. Who again, and PCB has just informed us recently that Ihsanullah will definitely be missing the entire PSL. So हमारे main bowlers no longer available. एक तो injured, दो in gold, so they can't be emerging. हमारे तमाम बैटिंग में टॉप 6 में एक बंदा रह गया, दो लोग रह गए हमारे खुशो के साथ. So and Andy Flower, our very charismatic, the guy who built everything, he's going. Heather Azhar, who had been there as Andy's number 2, he's also leaving. So this is what we inherited. So taking that, I think and worst of all, we had the worst possible draft picks to rebuild this team. So taking that as the starting point, I'm pretty happy with the job we've done, and the direction we've gone into, because this is definitely a very new look Multan Sultans. One dynasty has come to an end, and we had to start from scratch, just given the circumstances.
So just as a starting point, I want the Multan Sultan fans to know. I'm not saying कि कोई बुरी चीज होगी कि we should have low expectations, but we have to accept a dynasty had come to an end. A team was a complete influx, and we had to start practically from scratch. So हमारे भी एक rebuild ही चल रहा है इस साल. नहीं, that's understandable, अली भाई, क्योंकि obviously जैसे in an entirely different context, लेकिन जैसे जब हैदर भाई ने has taken over the Karachi team, वहां पे उनका भी एक different restart button ही basically दबाया, so आपका भी in a way बिल्कुल. you're starting from scratch, and that's and जहां तक expectation की बात है, आपकी बात सही है कि तीन फाइनल आप आई थिंक तीन फाइनल खेले ना आपने Yes. लगातार, तो मुल्तान की तो obviously expectation would be high. I mean, we'll go into it. We have Kani here, the Multan Sultan super fan here. So I'll I'll let Sakib bhai and you guys take over in questions. I'll chime in everything. Ji. Yeah, thank you so much, Ali bhai, again for coming over the show. We are humbled. मैं यार पहले क्यों कैरी को दूंगा क्योंकि he is मुल्तान सुल्तान फैन, तो आई रियली वांट के वही स्टार्ट करें. तो कैनी यार पहले क्वेश्चन आप थ्रो कर दे. मेरे पास तो 15-20 क्वेश्चन बने हुए हैं, मगर उसमें से मुझे पता है आप कुछ खा जाएंगे मेरे. मगर यार प्लीज, यू आर ऑलवेज कम ऑन अवर शो, और अब तो आप हमारे रेलू Thank you, कट्टी sir. हैं, तो प्लीज आप स्टार्ट करें. Thank you. First of all, Ali bhai, of course, thank you for taking out the time. We can only imagine how busy over the last week or so has been for you. So really appreciate that. And I know for a lot of Sultan fans, थोड़ी सी चीजें, a lot of it तो खैर has been very transparent, but कुछ एक चीजें चीज थी. एक चीज कहीं एक चीज बस. यार बहुत से क्वेश्चन मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि यार इसको शो को उर्दू में रखें, तो अली भाई के लिए भी और हम सब भी यार इसको उर्दू में रखें, क्योंकि मेजोरिटी हमारी जो ऑडियंस है इस टाइम पे उर्दू वाली है. सही. और जस्ट ये कि उर्दू में, क्योंकि हम में से कोई भी सफीर उर्दू नहीं. अब इंग्लिश वाली जो होती है ना, वो सही है, मतलब हम अंग्रेजी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि जितना उर्दू को इनकॉर्पोरेट कर सकें. हमारी ऑडियंस जनरली जो है वो सर आप बोले हम सराइकी में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. बट नहीं अली भाई, बेसिकली ये कुछ चीजें जिस तरह रैली रूसो की ट्रेड की आपने बात की, राइट? ये साकिब भाई बैठे हुए हैं, आई एम श्योर आपने काफी एक आध एपिसोड में देखा होगा. वी डिस्कस दिस इन डिटेल. नदीम उमर साहब जब का इंटरव्यू किया था हमने रैलू कट्टे पे, तो ही सॉर्ट ऑफ हिंटेड, डायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं, बट ही हिंटेड कि मुल्तान सुल्तान्स ने वो ट्रेड इनिशिएट किया. And I mean, we understand कि eras come to an end. बाज़ वक्त प्लेयर खुद कहता है कि यार मुझे एक फ्रेश चैलेंज चाहिए. I've played 3 seasons एक टीम से, मुझे एक कोई नया एडवेंचर चाहिए. तो रैली का is it in a sense कि when you came into the role, उसने खुद ही आके आपको कहा था कि इस सीजन I want to move, मतलब there is no negotiation या उससे कोई बातचीत हो सके? Because शुरू में initially when we took over the team, I spoke to all of our players. सारों को मैंने तसल्ली दी कि the team is staying, no issue. And again, I've had a really good relationship with Riley, even in the years I wasn't actively managing. So we had a good relationship. We kept in touch. Different चीजों में बातें होती रहती थी. It was during the trade window when his agent called and said, we've thought about it and we've been thinking about it for a while, but Riley wants to go to a new team and and have a new experience. And उसने imply किया था कि अगर क्वेटा के साथ हो सके तो ideal है. तो then obviously I spoke to the coaches, spoke to the team. हमने आपस में बात की कि नहीं हम इसको अभी रिलीज कर लेंगे, लेकिन राइट टू मैच कर लेंगे. हमने पे बात की कि यार someone who's given us so much success over the past few years. He's been an integral cog of our team since we picked him in our first draft. अगर वो कह रहा है खुद कि I would like to move on to a different team, हम उसे क्यों इनकार करें? Why should we force him to play in us? This is not the team we want to be, कि हम लोगों को force करें. और जब कह रहा है मैंने क्वेटा वापस जाना है, क्वेटा से वैसे बड़े अच्छे ताल्लुक मेरा, नदीम भाई is one of my favorite team owners to deal with. So जब उनसे हमने बात की कि वो ये कह रहा है, what are your thoughts? Obviously they were over the moon, and then we worked out a good trade. But it was definitely something that we didn't want to do. But we thought that after everything Riley has done for us, how can we, say no to his one request he's ever made? ठीक है साकिब भाई, इसमें तो काफी क्लैरिटी आ गई है. सवाल तो बहुत है, लेकिन थोड़े से ऑडियंस से भी लेने होंगे, आई एम श्योर. तो प्लीज करें, देन वी कैन टर्न इट. ऑडियंस की बात की है तो यार मैं ऑडियंस से स्टार्ट कर लूं कि मुल्तान सुल्तान के एक और ट्विटर के ऊपर ना बड़े. Let me just add some more context to this with the Riley thing. We were already in talks with. हम already बात कर रहे थे क्वेटा से about इफ्ती, because हमें पता था कि ये जो टिम डेविड नहीं आ रहा, डेविड मिलर नहीं आ रहा, we need to make a local core and we need to get someone like इफ्तिखार in. We were thinking आसिफ अली का भी सोचा हुआ था, लेकिन इफ्ती का ये था कि एक तो फॉर्म में बेहतर था और दूसरा वो स्पिन भी करा रहा था A1.
And generally, as a personality, हमारी वैसी एक even Rizwan was very keen to get Iftikhar. So Iftikhar generally was someone we thought would be a really good fit in our team for the next few years at least. So हम उनसे बहुत देर से कह रहे थे इफ्ती दे दो. And then finally, जब Riley की बात हुई, then that Ifti thing was also वो done होगी, and we were able to get the first pick, which made our draft way easier. So I think it just everything just kind of fell into place. So we went for it. चलिए ठीक है यार, मैं भी पहले मुल्तान सुल्तान के ट्विटर पे एक फैन है, उन्होंने मुझे डीएम किया कि वो आज ये इंटरव्यू लाइव नहीं सुन सकते, तो उन्होंने कहा कि यार काइंडली आप मेरा क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लीजिएगा। जिमर्स उनका नाम है, अली भाई को हो सकता है पता हो। उन्होंने काफी क्वेश्चन भेजे हैं, मगर और मुझे लग रहा है थोड़ा सा आंसर पहले ही अली भाई ने कर दिया है। और उनका क्वेश्चन यही है कि अली भाई, चेंज द होल स्ट्रक्चर ऑफ मुल्तान सुल्तान, चेंज कोचेस, मैनेजर्स फ्रॉम बैटिंग ओरिएंटेड टीम टू बॉलिंग ओरिएंटेड टीम. What he's trying to do with this, like despite of Multan Sultan reaching 3 times consecutive finals, why he feels that changing the whole structure is important. Yeah. जिस तरह वो बात पे आने कि एंडी फ्लावर को क्यों जाने दिया आपने और इतनी ज्यादा चेंजेस क्यों की और बैटिंग हैवी से बॉलिंग हैवी क्यों कर बिल्कुल लिया, बिल्कुल देखिए जबकि मैं मुल्तान इसका ऑलरेडी अच्छा कर रही थी। जी मैं दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन है, लॉट पीपल आर आस्किंग कि एक विनिंग फॉर्मूला आप चेंज क्यों करें. आई थिंक द इजीएस्ट आंसर टू दिस इज कि वी हैड नो चॉइस टू कंटिन्यू द मॉडल एंड स्ट्रक्चर वी हैड. टिम डेविड नहीं था, टिम डेविड मिलर जा रहा था, रैली जाना चाह रहा था, खैर वो तो 3 पे आता है, बट एंडी भी जाना चाह रहा था. उसका वो था ना फैमिली कि आई कांट बी अवे फॉर द किड्स फॉर सो लॉन्ग. सो वी हैड नो चॉइस के शुड वी कंटिन्यू विद द बैटिंग हैवी और शुड वी चेंज. We the team we were given did not have strong batting in the middle. It did not have Andy Flower. It did not have our original setup, and we couldn't get it back. So when we were thinking, acha, we're in a situation ke the thing that gave us success is no longer available to us, and the draft is such that those players cannot be replaced like for like. Now, given the players available, and given our performance and analysis of our past 4 years, what do we do now? Do we try to build the same thing, ka Bura vision, or do we make a new model to fix our gaps and strengthen other departments? So, for example, I mentioned it multiple times कि हमने ये देखा था कि पिछले 4 साल से हमारा क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस थी. स्ट्रेंथ हमारी ऑब्वियसली बैटिंग थी, खासतौर मिडिल ऑर्डर पे, एंड विच वी कांट गेट अगेन, तो वो तो एक्सेप्ट करना था. हमारी बहुत बड़ी वीकनेस थी हमारी बॉलिंग में, पावर प्ले बॉलिंग एंड डेथ बॉलिंग. दिस और हमने हर साल इस पे हमने कोशिश की थी इंप्रूव करने की. पिछले साल जॉश लिटल लिया, वो नहीं आया. अकीर हुसैन ले लिया, उसे कोशिश की, बात नहीं बनी. शेल्टन कॉटल ली, उससे ज़्यादा बात नहीं बनी. डेथ बॉलिंग पे हम अपने वो इसाना को ट्राई किया, इनको ट्राई किया, उन्होंने मार खाई बहुत. सो हमने वी न्यू कि ये प्रॉब्लम है, हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे थे. और लकली हमारे जो लोकल बॉलर्स थे, दे वर हैविंग अमेजिंग टूर्नामेंट्स लाइक उसामा मीर, इहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी. उन्होंने हमारी वीकनेसेस को एक वो पेपर ओवर कर लिया. पर हमें नजर आ रहा था कि 3 साल से हमारे ये इशू आ रहा है कि हमारी पावर प्ले बॉलिंग, पावर प्ले बैटिंग में हमारी कमजोरियां हैं. और हमारी पावर प्ले बैटिंग इज decent. We were, I think, third highest scorers, but in terms of impact, in terms of quick runs, हम वहाँ ज़्यादा high नहीं थे. So we thought, okay, if the players who are available in the draft, there are many more openers available, high quality ones that we can get, and compared to middle order batters who can make that impact. So then we decided, okay, let's try to prioritize top order batters to pair them with Rizwan. Let's get a local player, Iftikhar Ahmed, in the middle with Khushdil. So we have a top pairing of foreigners, we have middle order local, and then we go for 2 local fast bowlers to be our top and tail power play and death bowlers. So this is how we came to this. Again, we did not decide we want to change. When we inherited the team, this current structure was already gone. So we had to build a new one. And this is what we felt we could do given the draft picks available to us at the time. जी हसीब, आप जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अगेन अली भाई. अली भाई, मैं अभी हमने काफ़ी लोगों को जिक्र कर दिया. इस वक्त रायली की बात हो गई, क्या नाम है यार, बाकी प्लेयर्स की बात हो गई. एक प्लेयर जो अगेन लीडरशिप कोर का हिस्सा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैज़ बीन पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान, शान मसूद. और आपकी अगर मैं लीडरशिप कोर भी देखूं पिछले कई सालों में, रिजवान हो गया, रायली हो गया, शान हो गया, इवन पोलार्ड हो गया. इस मर्तबा यू हैव गॉन डाउन टू आई थिंक ओनली वन विच इज रिजवान जो कि है. तो इससे शान के पीछे क्या सोच थी उसको जाने देने की? शान we did not और want to let go of. हमने हमारे even our stats guys ना वो कहते देखो एक local top order left-handed batter
is a very rare commodity in Pakistan. इसको हमने नहीं छोड़ने देना. और हमने उसको very clearly कह दिया था शुरू में कि we are not trading you at all. He was very happy because he just wanted game time. Initially जब हमारी बात हुई थी एंडी फ्लावर से, obviously when we were doing the handing over कर रहे थे, बहुत लंबी हमारी से Zoom call हुई थी with all the coaches involved and everyone. वो कह रहा था कि you know शान का ये था कि we dropped him in the last season and he was very unhappy. तो क्योंकि वो अनहैप्पी था तो एक क्वेश्चन मार्क था कि वो शायद रहेगा नहीं रहेगा. एंडी कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये शान का आखिरी साल है मुल्तान सुल्तान के साथ. तो ये एंडी कह रहा था. हमने जब उससे बात की, अगेन मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ शान मसूद का, तो हमने जब बात की, लोकल कोच ने बात की, नेथन ने बात की, फ्रेडी ने बात की हमारे से, हम सारों ने फैसला किया कि शान को हम डेफिनेटली करेंगे रिटेन नो मैटर व्हाट. हम इशू ये हो गया कि अगर आई डोंट गेट इनटू टू मच, बट ही वाज ऑफर्ड कैप्टनसी फॉर कराची. And once a player is offered captaincy, it is very difficult for that person to turn that opportunity down. So हमने end तक कोशिश की इसको retain करने की, and you know कि the Shan trade literally happened an hour before the deadline. So again, he had, by the end of it, he said, "Listen, I need to be captain. It's my own city, my family. ये वो. I want to be captain." उसकी भी हमने eventually बात मान ली, but we drove a very hard bargain, and we were able to get diamond pick and silver pick and Faisal Akram. So हमने दे दिया reluctantly, लेकिन we got our pound of flesh. अली भाई इसमें एक तो एज अ कराची फैन आई एम ग्रेटफुल कि ये इट वेंट थ्रू एंड एज यू मेंशन आपने आखिर में बोला ना कि कराची का लड़का, और फिर हैदर भाई भी एक आई थिंक बहुत बड़ा एक उसमें फैक्टर होगा ऑब्वियसली. जैसे हमने हैदर भाई से बात की थी तो जो ट्रस्टेड लिeutenant वाली बात होती है, वो गए हैं तो अपना सिपह सलार लेकर जाएंगे वहां पे. सो वो एक इम्पोर्टेंट था बिफोर गोइंग इनटू द अगेन निटी-ग्रिटी ऑफ द पीएसएल. एक और एक चीज आपसे मैं ऑन लाइटर साइड पूछना चाह रहा था कि सुना था कि आपका नाम भी बड़ा फ्रंट रनिंग में था पीसीबी चेयरमैन के लिए. तो नहीं. मैंने ट्विटर पे पोस्ट देखे कि who will be the best PCB chairman. That was a big surprise to me, by the way. I had no idea that my name was be there and do so well. But I'm very flattered. But as a PSL owner, I can't obviously be part of PCB in any way. It's just a conflict of interest. But yes, I work very closely with PCB and have talked to them in detail about domestic cricket and how to change things. And I was part of Southern Punjab as well, so I work very closely with PCB. But again, while I'm Multan Sultan owner, I cannot be the chairman or any official in PCB. आप थे और नदीम भाई, नदीम उमर का नाम भी बड़ा हाई. I would vote for that. I would vote for Nadeem bhai in a second. बिल्कुल. फिर एनीवेज कैरी ऑन यार. बट ऑनेस्टली सॉरी आप लोगों की बात करता कलामी कर रहा हूँ उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि पीसीबी चेयरमैन ना एक बड़ी थैंकलेस जॉब है, बड़ी हाई स्पॉटलाइट वाली जॉब है. तो इवन नदीम भाई जैसा हीरा आदमी जो है वो आके बहुत बुरा होना है. तो आई वुड डेफिनेटली नेवर रिकमेंड someone like When Usman Mani was chairman PCB, he had no limelight on him. He purposely kept it away from him. He was very gracious. He gave all the spotlight to Wasim Khan. Yeah. So there's different ways of doing it. Someone who wants all the limelight, वो और बात है. But it can be done in a way where you just do the work you want to do and you don't have the limelight. I personally think limelight आ जाती है किसी न किसी सूरत में, बेशक Mani कोई करे ना. खासतौर से हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, there was never any criticism or any controversy around Hassan Mani when he was chairman. It was all about Wasim Khan. चले back to different. Just lastly on this, Ali bhai, कि अभी comments वगैरह आप देख रहे हो, एक general feeling, there's a lot of goodwill towards you even before you came back into the main seat of Multan. You have had for multitude of reasons we discussed in the last interview. लेकिन अगर आपने आपकी वो गुडविल वगैरह खत्म करवानी है 70% तो आप बन जाइएगा चेयरमैन, तो ऑटोमेटिकली वो गिर जाएगी. फिर एनीवेज कैरी ऑन गाइस विद दिस. हम नहीं चाहते आप लोगों के साथ ऐसा हो. जी कैनी नहीं, मैं असल में मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन था शान को लेके, इफ यू गाइस डोंट माइंड यार. अली भाई इसमें अब आप किस तरह देख रहे हो अपना लीडरशिप ग्रुप जो मुल्तान का है? लाइक आई नो रिजवान इज देयर, बट हु एल्स आर यू गाइस लुकिंग एट टू एक्चुअली प्ले दैट रोल इन द ड्रेसिंग रूम? क्योंकि कैप्टन यस फील्ड पे लड़ाता है टीम को, लेकिन आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए होता है जो कि मेंटर कर सके यंग टैलेंट को एज वेल एज टीम को जेल करके रख सके. तो आप अब किन प्लेयर्स को देख रहे हैं जो लीडरशिप कोर आपका बनाएंगे? क्योंकि बहुत मेन लोग थे वो तो जा चुके हैं, मेन प्लेयर्स से वो जा चुके हैं. देखिए ये नेचुरली होएगा. सो वंस एवरीवन गेट्स टुगेदर, हमारा कैंप शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह परसों.
हमें नजर आ जाएगा कि कौन है नेचुरल लीडर्स, कौन है वो पीपल आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स, मे बी लोकल प्लेयर ज्यादा होगा, मे बी कोई फॉरेन प्लेयर भी हो सकता है। तो जो भी नेचुरली, बिकॉज अगेन ये एक रीबिल्ड है, दिस इज अ न्यू टीम, न्यू आइडेंटिटी, न्यू मैनेजमेंट, कोच भी नए हैं, हिजाब इज the youngest general manager in the PSL. So again, I'm more active now, so it's a complete rebuild. And now we're going to see the new, whatever comes up, we just want it to be authentic. हम ये नहीं चाह रहे, हम कहेंगे देखो हमें लगता है पहले से प्री प्लान करेंगे कि ये होगा हमारा लीडर, या ये इनको ये इस ग्रुप को संभालेगा। हम वी जस्ट गोना गेट द प्लेयर्स टुगेदर, क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट, friendly environment, get everyone feeling connected to each other, and we'll see what comes up. But I'm not, I have no pre-made plans accordingly. I'll share one interesting things. एक मैं interesting आपसे बात शेयर करूं, मैं बहुत ज़्यादा believer हूं in getting the team integrated with each other and be that connected unit like many other franchises are. मैंने ये देखा कि हमारी टीम ना इतनी आपस में, मतलब आप काफी लोग थे आपस में क्लोज थे, पर एक ओवरऑल वो फील नहीं थी कि जो हमारे जूनियर प्लेयर्स हैं दे फीलिंग एज लव्ड एज आवर सीनियर प्लेयर्स, या इस तरह का मुझे, अगर ऑब्वियसली जो प्लेयर्स हमारे पिछले साल रहे भी हैं हमारे साथ, वहाँ उनसे रब्ता होता है मेरा, तो ये एक चीज़ मुझे मिसिंग रही थी। कई कोचेस थे वो फेल्ट कि मैं हमारी बात नहीं सुनी जाती, ज़्यादा इनकी बात सुनी जाती है। तो हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन बिल्डिंग अ कल्चर विद इन मुल्तान सुल्तान्स। अभी तक हमें वी डोंट नो व्हाट इट इज़, हम खुद ही बनाएंगे, हम डेवलप करेंगे विद दिस न्यू ग्रुप। सो इफ एनी ऑफ यू वॉच गोल्फ, अभी हुआ था राइडर कप व्हिच इज यूरोप वर्सेस यूएस हुआ था। US. टीम कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड द यूएस, इवन दो टीम उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। सो लोगों ने पूछा यूरोप वालों से कि व्हाट वाज द मेन डिफरेंस। आई थिंक द कैप्टन ना उसने बात की, कहता है वी हैड दिस गाय, हिज नेम वाज ओवन ईस्टवुड, हु वाज आवर हाई परफॉर्मेंस गाय। He got us together before the tournament, and we did these different activities, sat around the fire, baatein ki, shared stuff, we had these rituals we came up with, humne ye kiya wo kiya, and that really made us feel connected with each other, and we felt we are one unit. And when we played the US, they were just individuals playing for themselves. And that is, the captain said, that was our main difference. So we are very happy to announce that we have gotten Owen Eastwood on board with Multan Sultans, and he will be the person leading this cultural development and this unity within the team for the next 2 years. So हम ये बहुत ज़्यादा पे focus करेंगे इन चीज़ों पे, and we have a world-class professional who's also worked with the England football team for many years, and rugby teams, I think in New Zealand, South Africa. So he's going to be on board with us for the next 2 years. So I'm really excited ke what comes up as a result. That's a big news, Ali भाई। आपने मैं तो समझ रहा था कि आप अभी कोई कॉर्पोरेट वाली वो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर देंगे आपकी। लेट्स गो फॉर अ एस्केप रूम और समथिंग टू दैट इफेक्ट, लाइक ना दैट्स गुड। मैंने इनका नाम जरूर सुना हुआ है, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अगर वो ऑब्वियसली राइडर कप में थे और उनके साथ हाई प्रोफाइल ही होंगे। सो दैट्स, और जैसा कि आपने पहले भी टच किया कि आप एक दोबारा से शुरू से एक शुरुआत कर रहे हैं टीम की, तो एक जेल और ये पूरी टीम जो because we're doing things a little differently than other teams have. We have 2 female coaches in the team, in the management now. Again, young coaches. Hijab is also there. We have mostly young people in the team. New head coach. So there's so much change and so many new people there that abhi there's no connection. क्यों होगी? Why would they be? Obviously, they're all new people. And in a short time of PSL, एक महीना होता है आपका, things can go bad really quickly. So we need to start building that from day one. अली भाई, मैं यहाँ पे रिजवान आए थे लीग खेलने, तो उनसे इत्तेफाक हुआ था मिलने का। तो उनसे जब बात हो रही थी, हैदर भाई हैड लेफ्ट और आप ऑन बोर्ड आ चुके थे वापस, तो उस वक्त रिजवान के भी इसी तरह के ख्याल थे जो आपके, उनका कि यार बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं और अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। और he was also so very uncertain at that time, which direction we're going to be heading in, because it was very fresh, everything was new. तो एप्रीहेंशन मुझे पता है कि थी वहां भी, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आपने इसको एक बिल्कुल सीरियस नए चैप्टर की तरह शुरू किया है, विच आई थिंक इट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। क्योंकि पीछे का छोड़ दो, 3 फाइनल है, हाँ ठीक है, लेकिन हम एक दोबारा से स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। आपने जिक्र किया आपने हिजाब को लाया, आई मीन वी हैव सीन हिजाब्स जर्नी एज वेल फ्रॉम द क्विक राइस, एंड शी इज वेरी amazing. बिल्कुल। हम वी हैड रेगुलर इंटरेक्शन विद हर, हमारे शो में भी पहले आ चुकी हैं,
So I know as much as I could from social media. I know hijab and how she's quite, she's a mature head on, और काफी articulate किस्म की खातून है वो. So that's a उस पे भी बात करेंगे कि वो कैसा गया आगे. But anyways, जी, any of you three hardcore PSL fans have your questions, please go ahead. थैंक यू. Can अच्छा you? अली भाई, आपने कोचेस के चेंज की बात की, तो ऑब्वियसली विद एंडी लिविंग यू चोज टू प्रमोट अब्दुल रहमान सर टू हेड कोच, और ये एक बड़ा होलसम डिसीजन इन द सेंस बिकॉज ही इज समबडी डोमेस्टिक क्रिकेट में ही इज डन हिज टाइम, पेशावर से लेके ही इज वर्कड विद द शाहीन्स अंडर 19s. वो कहते हैं ना डोमेस्टिक का प्रॉपर रगड़ा है एंड ही इज बिन दैट. तो उनको पीएसएल स्टेज पे प्रमोट करना, आई थिंक इट्स अ वेरी होलसम डिसीजन बिकॉज बहुत सी टीम्स आर गोइंग फॉर द ग्लैमरस फॉरेन कोच रूट. Yeah. तो So दो चीजें इसमें थी बिकॉज जो स्ट्रैटेजी थिंक टैंक है उसमें नेथन लीमन भी थे एंड ऑब्वियसली मोहम्मद हसीम जो बहुत प्रोग्रेसिव माइंड है, हमने देखा है. तो अब्दुल रहमान के साथ एक तो हाउ मच से डिड ही हैव, बिकॉज हम देख रहे हैं हमेशा से कि सुल्तान्स आर द ट्रू पख्तून टीम इन द पीएसएल, और हमारा नेक्सस ऑब्वियसली विद इफ्ती कमिंग इन, खुशदिल, रिजवान, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिल्ड होगी. तो रहमान सर के साथ एक तो हाउ मच से डज ही हैव इन दैट थिंक टैंक, और दूसरा हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम and how he kind of looks at the T20 game. It's changed in the last. So initially when Andy told us he wants to leave, initially बात हो रही थी कि थोड़ी देर के लिए आएगा, can he come for a bit and will he come as a team director, remote काम करेगा. तो eventually भी हम बात उससे एंडी से बात भी कर रहे थे, वो भी कहते हैं if I want to come on and give it my all. तो ऐसी बातें चल रही थी हमारी. So anyway, when we decided कि he's not going to come, we then thought कि what do we do now? Do we hire a replacement for Andy and then keep everything as is? So we spoke to some agents, उनसे बात भी की. I mean, thinking about it, I was like, आगे कोई नया बंदा आएगा, गोरा. उसके likely अपने होंगे coaches that he likes to work with. Everyone has pet players, everyone has pet coaches, assistants. तो वो maybe he want to bring his own spin bowling coach or fast bowling coach or whatever. फिर उनको लाना पड़ेगा, और अगर एक साल बाद वो वापस चले गए IPL या कोई और गिग होगी, फिर पूरी टीम चेंज हो जाएगी. So we're thinking about it. We luckily have the two best young local coaches in Pakistan, in Abdul Rahman and Mohammad Wasim. जब ये दो हमारे पास available हैं, we don't really need a head coach जो बाहर से आया है, doesn't really know the league, doesn't know the players. तो हम उसको क्यों लेके आ रहे हैं? What we need is a foreign unbiased voice in the dressing room who has stature and weight in his voice. So we decided that we're not going to have the foreign Gora as our head coach. We're going to have empowered local coaches. Luckily, we have the two best. And we're going to bring in one director of strategy who will be that unbiased Gora voice who doesn't know any of the local players. And any decision making is being done with that person on board. And that guy is Nathan Lehman. So we decided we'd rather have Nathan plus local coaches than Gora coach and then two assistant coaches. So this is the model we went with. And that's why we decided we will promote Abdul Rahman and bring Mohammad Wasim as the assistant coach. So that was thinking behind that. Rahman bhai I've known for many years. He was with us in Multan Sultans in my first year as well. Then he was with us in Southern Punjab as well. And we have a very good relationship in which he has. So we have a really good relationship. I have never overruled anything he's ever said. I'm always suggesting things, pushing things. We have a very collaborative approach. But उनको मनाना होता है चीज़ों का. तो एंड तक मेरी कोशिश थी कि एक दो प्लेयर थे, मैं इनको बस थोड़ा मना लूं ऐसा, लेकिन एंड तक वो नहीं माने. एंड he had good reasoning for it, not कि कोई जिद वाली बात थी. He had very good reasoning for it and I understood. तो मैं ज़्यादा उनको पुश भी नहीं कर रहा था. So I make sure कि when we're in a room, so when we did the draft, if you saw our draft documentary, so it hota we're in a big conference room, we have the board up and we have everyone there. So it's me, Nathan, Rahman bhai, Mohammad Wasim, we have the local analyst, we have Freddie Weil as well, we have Hijab, we have multiple people there. We have non-cricketers also there, just to make sure that they can give us some additional voice in the room, or make sure if they can pick out something that someone has missed or something. And we have a very open conversation about players there. And no one person has a stronger voice than the other. Everyone argues, everyone gives ideas, and we have a very, very collaborative approach. So we at no point did Abdul Rahman feel कि यार I don't want this player, या I feel differently, और मैं ये चलो I accept. ये कभी नहीं होता. या हम मनाते हैं सारों को, या हम move on करते हैं. अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइए कि नसीम शाह वाली ट्रेड की बात कर लेते हैं. आई नो कि आप लोगों ने भी काफी ऑफर्स की उसके ऊपर, जिस तरह की आपकी सोशल मीडिया टीम पे मैंने देखा था.
तो वो ऑफर्स कहाँ तक आपकी कोई क्लोज नेगोशिएशंस हो गई थी किसी एक मौके पे? क्योंकि बहुत सी टीम्स क्लेम कर रही हैं कि नसीम हमारे पास आ गया था मगर फिर बाद में कहीं और से अच्छी ऑफर आ गई, तो आप लोगों की भी कहीं पर कोई फर्म बात हो गई थी? There was a time when there were a couple of options for Naseem that Quetta were happy with, but Naseem had made it clear that he wants to play for Islamabad United. So then that's where he went. Because obviously for अच्छा, Naseem, many teams were were in contact with Quetta, obviously making good offers. And but Naseem had made it clear that he wants to go for Islamabad. So again, जहाँ player खेलना चाह रहा है, why would he force him to play somewhere else? आपने इसी से अली भाई आपकी पूरी कहानी पे जो है ना वो साकिब भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एक बैक एंड फोर्थ एक मसालेदार लास्ट मिनट डेडलाइन टेक ओवर वाली कोई स्टोरी सुनाएंगे। आपने तो पूरी उस पे पानी फेर दिया कि नहीं यार वो खेलना ही नहीं चाहता। वो चाह रहा था इस्लामाबाद जाए, हम क्या कहते? कौन हु कुड से टू कि नहीं नसीम तुम नहीं खेलो, हमारे पास खेलो। वो जाना चाह रहा है वहाँ, रैली जाना चाह रहा है, क्वेटा वो जा रहा है, जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ये अली भाई ये सारे प्लेयर्स इस्लामाबाद से क्यों खेलना चाहते हैं? ये सारी अच्छी ट्रेड्स प्लेयर्स जो मतलब कि अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अच्छी ट्रेड्स हो जाती हैं, इस्लामाबाद के पास क्यों जाती हैं? I only know about the Naseem trade to Islamabad that he wanted to go. उसके अलावा I don't know anyone who wanted to play there. सही। चले इसी पे मेरा आई थिंक वो पिछले कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे कि हसन अली भी गए, सेल्स भी गए, Hassan अमाद वसीम गए, was wild बड़ी carded by Islamabad in the draft. So there was no it wasn't a choice. तो wild card हुआ था. सही। अच्छा वो वैसे मैं लाइटर नोट पे भी ये इस्लामाबाद वाला क्वेश्चन कर रहा था, मतलब बल्कि ये भी तो क्वेश्चन मैंने रेहान भाई से भी किया पिछले हफ्ते, तो उन्होंने भी इस पे अच्छा जवाब। अच्छा एक और क्वेश्चन अली भाई, रिटेंशंस की बात हुई, आपने एहसान अल्लाह का रिटेन किया है, तो उस पे बहुत ज्यादा हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन एहसानुल्लाह के ऊपर आ रही है कि एहसानुल्लाह ये सीजन खेलेंगे, उनका रिहैब कैसा चल रहा है और कोई पॉसिबिलिटी है ये सीजन खेलने की या साकिब नहीं? भाई जवाब दे चुके हैं वो। बड़ा फर्म है कि साकिब खेलेगा। भाई मैं आपको एक दफा एक सेकंड रोकूं। हैदर भाई जो है ना सही कहते हैं, आप सवाल करते हैं तो सुनते कुछ नहीं, सामने वाला क्या कह रहा है। अली भाई ने पूरा शुरू में यार जवाब दे चुके मगर थे। नहीं वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है इस वजह से उन्होंने हमने शो के शुरू में ये ब्रेकिंग न्यूज दी है हमें साकिब भाई। PCB ने हमें breaking email news करके कह दिया है कि एहसानुल्लाह will not be available for the PSL this year. तो हमें इसको रिप्लेस कर लें। हमने इसको रिप्लेस नहीं किया, हम उसको मुझे साथ लग रहा है फिराज भाई साकिब भाई ना हमारे रखेंगे। जख्मों पे वो जो कहते हैं ना नमक छिड़कने का वो नहीं हैदर भाई वाज एक राइट, हैदर contours भाई आ वाज रहे राइट। थे। हैदर भाई ने शिकायत की थी कि साकिब भाई आप सवाल कर ले तो सुनते नहीं, आगे वाला क्या कह रहा है। अली भाई ने पूरी ये कहानी सुना दी थी कि भाई उनको बता दिया। अच्छा नहीं वो खैर मेन बात पीपल वाचिंग उनको ये क्लियर नहीं था, तो क्लियर हो गया। हाँ, इन साकिब भाई डिफेंस और जो हैदर भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने जब पहले वो स्टोरी बताई थी उन्होंने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया था, तो जब साकिब भाई ने नसीम का नाम लेके क्वेश्चन किया था तब उन्होंने बोला मैंने तो सारी स्टोरी बता दी है, आई थॉट यू वुड हैव कनेक्टेड द डॉट्स। अच्छा वो नहीं हुआ था। मेक इट क्लियर, तो एहसानुल्लाह अली भाई पूरे सीजन के लिए आउट है। यस, हमें ज्यादा कंसर्निंग बात ये है कि जो उसकी सर्जरी हुई थी, हमें शक है कि वो मतलब जैसे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अभी जब आएगा वो हम उसको ज्यादा सेस करेंगे डॉक्टर जैब के साथ, फिर हम उस पर रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन हमने उसको रेकमेंड कर दिया पीसीबी को कि आप एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट जो हमें रेकमेंड कर लिया इंग्लैंड में, आप उसको एक सेकंड ओपिनियन ले लें। लेकिन अभी तक पीसीबी ने उस पर कोई अमल नहीं किया। पीसीबी डजंट लाइक other people telling them what to do, so it's going to be uphill battle. And again, I don't want you to comment on PCB much, because I don't want you to be in hot waters and anything. लेकिन एक मेरा हम लोग का कि अपना एज फैंस एक परसेप्शन, यही परसेप्शन क्या मतलब सामने नजर आता है यार, पिछले 4-5 साल में 3 साल में हमने देखा है कि ये एक ट्रेंड बन चुका है हमारा कि हमारे फास्ट बॉलर आते हैं, इंजर्ड होते हैं, हम उनको somehow the other we make a dog's ear out of it, तो वो जो है ना बिल्कुल जब वो वापस आते हैं तो वो बॉलर ही नहीं। अब एहसानुल्लाह जो है वो पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पे लगा हुआ, खाली वो टिकटॉक के और इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो बॉलिंग भी कर रहा है। अगर वो फिट नहीं था तो वो इतनी फुल थ्रॉटल बॉलिंग क्यों कर रहा था? क्या वो उसके रिहैब का पार्ट? वो बेचारा जो डॉक्टर्स कहेगा वो वही करेगा ना। बिल्कुल अब वही डॉक्टर्स एडवाइस कराओ। हमने एडवाइस किया कि was Dr. Jav involved? ये जो डिसीजन मेकिंग है for him to नहीं, डॉक्टर जैब ने उनको कहा कि आप इसको चेक कराएं फ्रॉम द सर्जन। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, उन्होंने उसी सर्जन को भेजा जिसने सर्जरी की। उन्होंने कहा कि आप बॉलिंग करा लो, आप बॉलिंग शुरू करो। उसने बॉलिंग शुरू करी, उसकी इंजरी फिर से होगी। फिर कहती है एक्चुअली आप हफ्ते रेस्ट कर लो। तो मतलब क्या ही कह सकते हैं हम।
Yeah, this is becoming a trend or a concerning trend हो गया हमारे हम By the way, अब just want to clarify that this was not a trend over the past few years because देखें Shaheen injured हुआ था, he was sent to England to the best, अब rehab करो, Dr. Jab ने किया था उसको rehab, तो there was good decision making. Recently decision making थोड़ी मतलब लेकिन अच्छी नहीं जा शाहीन रही. को भी अली भाई आपको लगता है कि वो उसको हमने थोड़ा अंडर कुक वापस नहीं लिया था जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज तक भुगत रहे हैं हाँ वो different बात है, but at least he was sent to the right person to get treated. yes but अब तो ना वो ट्रीट हो रहे हैं ना और भी 2-3 प्लेयर्स हैं who came to see Dr. Jab and he was there. उनको भी पहले उनको इजाजत नहीं मिली थी to go to somewhere else. So anyway, this is a long topic. I don't want to talk about this. Too depressing. हाँ एग्जैक्टली let's yeah ट्रक को वापस मोड़ते हैं मुल्तान सुल्तान और पीएसएल की तरफ जी साकिब भाई कानी हसीब जो भी आपके प्लीज को है अच्छा अली भाई एक वैसे बात तो फैसल पे करनी थी, उस पे थोड़ा विल पुश दैट लिल क्योंकि अभी एहसानुल्लाह की बात हो रही है। तो एहसानुल्लाह का जो रोल है इन्फोर्सर वाला, वो तो ऐसा रोल है कि उसकी रिप्लेसमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ढूंढना। इज देयर समथिंग इन द वर्क्स कि कोई शॉर्टलिस्ट बनी हुई हो या कोई प्लेयर्स जो अराउंड नहीं देखिए स्क्वाड में तो आई नो इन्फोर्स की बात नहीं है, मेन चीज ये है कि उसकी which phases is he bowling. So he's not bowling in a power play as in the first 5 overs. He's not bowling at the death. तो वो जब bowling कराता भी है वो कराएगा middle में. So we just need to make sure कि all our phases we have enough bowlers कि we can give them spin options, we can give them pace options. So अभी हमारा जो current plan है, we have 2 foreign fast bowlers who are doing top and tail. So 2 overs in the power play and then 2 together in the death. Willie शायद एक death पे. And then in the middle, we'll have Abasa Fridi, who's obviously our star, highest wicket taker. Then we have 3 spinners available at any given point, which is Osama Mir with his wrist spin. Then we have Iftikhar with his right hand off spin. And then we have Khushdil with left arm off spin. So we have all the possible kinds of spins available to us at any time. And then in addition, we'll likely have another fast bowler in the team who can give us that pace option in the middle if we don't want to go with pace and pace आगे पीछे. कैरी के दिल से एक और अली भाई बड़ा बॉलर जो है बड़े करीब है इसके, अरफात मिन्हास, तो रिटेंशंस में आप उनको रिटेन नहीं कर सकते. Arafat, I have मुल्तान का बच्चा भी है ना, तो वो और भी actually I have a picture. When we were at the draft table, we had written his name in the silver category, and we were ready to go. Then one of the things we had planned we didn't get, so then we had to adjust, and then we had to pick an extra fast bowler instead. But we had written his name and signed it. वो हम देने वाले थे in the next round, but फिर opening की picks we couldn't do it. But that's the one regret I have from the draft. right to match तो कर सकते थे. नहीं हमारा प्लान चेंज हो गया था ना. We had decided कि हम एक एक्स्ट्रा बॉलर उठाएंगे instead as a silver pick, and then के emerging हमने extra emerging उठाना था in the supplementary anyway. So we knew कि supplementary में we're going to pick Jordan and we're going to pick an emerging bowler. So he only could get picked in silver, and we had to pick extra bowler instead of batter. And we thought कि in the supplementary जो replacement draft है वहाँ हम 2 player pick करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ pick करेंगे. पहले pick हो गया. So that was a really heartbreaking moment when Arafat got picked. नहीं अरफात का तो वाकई बहुत हार्ट ब्रेकिंग वो है for obvious reasons. When I was in Multan, I went and met his dad, and I showed him the picture, and I told him that Arafat is the one who got away, and even he was really sad that he's not playing in Multan. But again, I'm happy he got picked. But definitely, my one regret is Arafat. नहीं आई जेन्युइनली होप कि एक दिन वो घर लौटे बिकॉज यू नो आपकी मुल्तान प्रोडक्ट्स की एक ही बात होती है. आई नो यू बिग ऑन दिस एज वेल. मुझे हमेशा फील होता है जिस तरह आमिर अजमत है, अरफात मिन्हास है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये मुल्तान के बच्चे हैं. तो उसी नोट पे मैं फैसल की बात करना चाह रहा था बिकॉज फैसल इज समवन आई नो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी उसमें काफ़ी रही है. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये जीशान अशरफ का जो ब्रेक थ्रू सीजन था उससे पहले कोई यूएस टूर था या यूएस ओपन था एंड यू टुक फैसल देयर वो कोई 15-16 की एज में विद अली शफीक एंड a few of these boys. तो तब से ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ हुई है. अब तो फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, यू नो अंडर 19 से वो स्टेप अप करना. और बीच में वो कराची चला गया था, वहां पे चांस नहीं मिला. कराची तो खैर अलग डिसीजन है, उनने तो बड़े बड़े प्लेयर्स को हमें ऐसा दिखाया है कि वो शायद T20 में फिट ही नहीं होते. बट फैसल का मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि हाउ हैव यू सीन हिज राइज, एक ये, और दूसरा बिकॉज ऑब्वियसली 15-16 की एज से लेके 19 साल की एज तक एक वो आपकी वैरायटी आपकी कैरेक्टर ग्रोथ होती है.
तो हम बहुत से देखते हैं ना, अंडर 19 से जो स्टेप अप होता है वो फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इट्स हार्ड टू मेक फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो फैसल का डू यू थिंक ही इज रेडी फॉर द पीएसएल स्टेज टू बी अ स्टार्टर, या अभी थोड़ा ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म तो प्रोस्पेक्ट है ही, बट इस सीजन के लिए कितना आप उसको इन्वॉल्व होता हुआ देखते हैं, या यू जस्ट वांट हिम टू बी अराउंड द टीम एंड सॉर्ट ऑफ Again, as you mentioned, I'm a big fan of Faisal Akram, which he's been with us since he was 15. I remember actually the first Multan Sultan event we had ever was in Multan, and we had invited Faisal to that team dinner, and he was a cutie pie baby tha. So he came then. That's when he first met, because he had done really well domestically in the under 16s. So we've known him since then, and we've worked together in batting camps, bowling camps, fielding camps, and again the US tour was I think the US tour was a game changer for Faisal, because उससे पहले he was very in his shell. ज़्यादा बातें नहीं करता था, conference का थोड़ा था with other players. When he was there, it was just these young boys together, जुगतें चल रही हैं, गप्पें चल रही हैं, fun new experiences हो रहे हैं, took them go-karting, took them to an arcade, matches खेले. So that was, I think, the changing point, and he came back and said, I've never felt more confident as a human. तो वो उसके लिए गेम चेंजर था फैसल के लिए वो यूएस टूर. Anyway, so in this season, जब ट्रेड भी हो रही थी, हमने सोचा कि फैसल obviously is having a left arm leg spinner in the team is obviously huge value, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि ये हम इस सीजन के लिए इसको उठा रहे हैं. हमने उठाया कि now फैसल अकरम is part of Multan Sultans. तो इस साल अगर 1-2 मैच खेले, 5 खेले, जितने भी खेले, great, but next year and the year after, our goal is to make him our starting wrist spinner in the team for many years to come. Whether that happens next year or the year after, it doesn't matter. But Faisal is now part of our team, and one day he will be our frontline spinner, and I have no doubt about this. जी कोई अच्छा सीट पे चले गए. चले, मेरा क्वेश्चन आपने पूछा है, कैनी आपका क्वेश्चन था ना फैसल अकरम वाला, ठीक है. अच्छा, जरा ड्राफ्ट पिक से स्टार्ट कर लेते हैं. बिल्कुल, तो आपकी पहली पिक थी डेविड विली. मेरे ख्याल में मैंने आपका वैसे कहीं पर इसके ट्विटर के ऊपर तो आपका इसका रिप्लाई डेविड विली पे देख चुका हुआ हूँ. तो व्हाई डेविड विली वाज योर वेरी फर्स्ट पिक, और क्या आपने रायली रूसो वाली ट्रेड सिर्फ डेविड विली की वजह से की थी, या नहीं फिर नहीं सर, डेविड देखिए, हमने जब आप ड्राफ्ट में जा रहे होते हैं ना, जो अच्छी पिक्स है ना, उससे ये फायदा नहीं होता कि आप जो सबसे बेस्ट अवेलेबल प्लेयर है उस राउंड, उस कैटेगरी में आप पिक कर लोगे. जब यू हैव गुड पिक्स ना, यू कैन प्लान बेटर. तो जब हमें पता था कि पहली प्लैटिनम पिक हमारी है, और पहली डायमंड पिक भी हमारी है, और फिर गोल्ड में हम ही पिक करें, वो थे जल्मी भी हमारे साथ था, बट बेसिकली हम ही थे, जो आप समझें कि डायमंड 7 एंड डायमंड 9 थे, बिकॉज ऑब्वियसली गोल्ड, डायमंड के बाद ही गोल्ड आते हैं, वही डायमंड पे ड्रॉप होते हैं. सो व्हेन वी न्यू वी हैव दीज वेरी हाई पिक्स, वी कैन देन प्लान अकॉर्डिंगली. हमारा गोल क्या था? हमें चाहिए थे 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स, जिसमें से एक कम से कम हो लेफ्टी, और हमें चाहिए थे 2 टॉप एंड टेल बॉलर्स, एक बेटर इन द पावर प्ले, एक बेटर एट द डेथ. ये हमारा प्लान था. अब सवाल था कि हम ये 4 प्लेयर कैसे पिक करें. हमने सोचा कि अगर फर्ज करें पहला प्लेयर में उठाया डेविड मलान, जो लेफ्ट हैंडर भी है, टॉप ऑर्डर भी है, शान की गैर मौजूदगी में इस तरह का प्लेयर होना बड़ा हमें फायदेमंद है. तो हमने सोचा अगर उसको हमने ले लिया, फिर कौन से बॉलर्स हमें मिल सकेंगे इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स. एंड हमें again, Heather has been part of us for a long time, so we know him very well. तो हमें एक बहुत क्लियर, हमें यकीन था कि looking at Karachi's team कि and obviously after David Willey had retired and they had worked together before, तो हमें पता था कि बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि if we don't pick Willie, he will get picked in either platinum 1 round or 2 round by Karachi, because they were picking 2 players. तो हमें पता था कि अगर हमने इसको पिक ना किया तो ये गया. So then we have to come up with backups. तो हमने ये सोचा कि अच्छा, Milan है, he might not get picked in the first few rounds because this person has this person has this person has this. तो उसका chance of getting picked, हमें लगा कि शायद लाहौर पिक कर सकता है, लेकिन फिर वो भी था कि उनका कोई खास प्रायोरिटी शायद ना हो मिलान, अब बाकी लोग भी अवेलेबल है. सो हमने सोचा कि इफ वी पिक विली फर्स्ट, वो एक चेक बॉक्स हो गया. In Diamond 1, we have a very high chance of picking either Milan or Riza, again top order batters. तो हम उसको पिक कर सकेंगे, तो वो आ गया. एंड देन इन गोल्ड देयर आर लॉट ऑफ बॉलर्स अवेलेबल हु वी कैन पिक, जिसमें वो थे, जिसमें वी एंडेड अप गोइंग विद रीस टॉपली. सो इट वाज नॉट अबाउट कि हमने बेस्ट प्लेयर पिक करना है बिकॉज फर्स्ट पिक है. इट्स जस्ट हाउ डू वी गेट द 4 प्लेयर्स वी वांट, एंड वी गेम्ड इट आउट. एंड लकीली जो हमने सोचा हुआ था वही हुआ, एंड वी वर एबल टू गेट ऑल द 4 प्लेयर्स दैट वी वांटेड.
इसमें अली भाई आपने रीस टॉपली का एक्सपेक्ट किया था कि वो गोल्ड तक बचेगा जब रीस इनिशियल टॉपली प्लान हो रहा था? जो अगर आप देखें ना इस ड्राफ्ट को, बिकॉज गोल्ड में हर कोई पैक था, सिर्फ हमारे 2 पिक्स थी और जलमी का 1 पिक था, एंड इट वाज लाइकली दे वर गोइंग टू पिक सलमान शाह. At least that's the expectation was, and they were going to, because they thought हम पिक करेंगे. हमने फिर उनको वही ड्राफ्ट में कह दिया कि नहीं नहीं आप we're not going to pick सलमान, हमारी वो होगी थी आपस में बात. So they called their pick back and then they picked वो overseas. Anyway, so अगर आप देखें उसको ना, that actually wasn't gold. वो basically diamond 7th pick and 9th pick थी. तो because कोई और पिक नहीं करा था गोल्ड में. डायमंड के फौरन बाद हमने पिक किया. तो वो डायमंड हमारे पास, we had diamond 1, we had diamond 7 and we had diamond 9. So great. अच्छा मेरा हसीब, हाँ हाँ हसीब पहले आप पूछ ले फिर मैं उसके हाँ बाद जी, मेरा थोड़ा सा फॉलोअप सवाल ही है. अच्छा एक तरह से अब जो स्पेशली द न्यू बॉल बॉलर्स ये थोड़ा सा गोल्डस बनते जा रहे हैं. फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव हमने देखा कि रसीम गया तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल हो गई क्योंकि पावर प्ले में बॉल कराने वाला न्यू बॉल से बॉल कराने Dog in your team is a new ball bowler. एग्जैक्टली. तो आपके उस हिसाब से डेविड विली बिल्कुल समझ आता है कि पिक करना, बिकॉज मुल्तान का एक पावर प्ले में आपको बॉलर चाहिए जो कि बॉल को स्विंग कर सके. Also वो बैटिंग, also अच्छी वाली बैटिंग भी कर लेता है. So in your Exactly. middle order हमने सोचा हुआ था कि if we have खुशदिल, if we have तैयब, खुशदिल and if तैयब, इफ्तिखार, खुशदिल, it's an all local middle order. We would want to have someone being able to guide that chase if need be. And for us, David Willey would play that role as well. So that's why he was a double importance to us. Okay, new ball specialist, left armer bhi, and he can give us that, experienced head in a chase with our locals around him. बिल्कुल. तो मैं मेरा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टू फोल्ड था. वो इन द सेंस के एक तो ये कि चले विद डेविड विली हु यू वर सेइंग एज अ पार्टनर, वुड इट बी रीस टॉपली और वुड इट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से खुशदिल आ गया, डिपेंडिंग ऑन द Anyway, पिच ऑफ कोर्स. so this is now the sad part of the interview where I tell you, okay, unfortunately, one of our main strike bowlers, Reese Topley, does not gotten NOC for the PCB, for the PSL, and will be pulling out, and we have to replace him now. Exactly, Kani, exactly. This is big breaking. Yes. So just for context, Topley, the reason we wanted Topley so bad, obviously he's an amazing new ball bowler and amazing death bowler. His specialty is he's a left-hander killer. जो lefties है ना, no one has a better record against lefties than Reece Topley. And every team in PSL has a left-handed opener or in the top 3. So he was going to be our main weapon कि power play में आएगा और lefties को उड़ा देगा. अब उसको 2 दिन पहले अभी बात चल रही थी और मैं कल उन्हें कंफर्म बताया कि उसको एनओसी नहीं मिल रही because he has a niggle, he has a scan in England, and now he's going to मेरा यही फॉलो था कि ये इंजरी बेस्ड एनओसी, क्योंकि ये तो रीस टॉपली कोई बहुत ही बदकिस्मत बॉलर है क्योंकि He's jinxed when it comes to PSL. वो आईपीएल में भी इसके साथ हो चुका है. ये आईपीएल में he was picked and then he got injured. अभी भी फनी बात ये, एट द ड्राफ्ट ना आई मेट हसन चीमा फ्रॉम फॉर्मरली फ्रॉम इस्लामाबाद. वो भी कह रहा था कि यार बस दुआ करो कि आ जाए. हमने बड़ा पिक किया, कभी नहीं आता. मैंने नहीं, हमारी उससे बात हुई है, कल हमारी उससे बात हुई है, ही इज रेडिंग टू गो, ये वही हो. अब ही इज प्लेइंग SC20 है, उसको वहां निकल चल रही है. आपने जो ट्वीट की थी अरे ऑल योर वेल लेड प्लान्स कि हमारा बॉलिंग फोकस होएगा, 2 टॉप टेल बॉलर्स, लेफ्ट हैंड फला, सारे हमारा वो डाउन हो गया बिकॉज भाईजान. अच्छा अनोइंग बात ये, वो इंजरी, ये हमें खबर मिली है आफ्टर द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट. तो जो हमारे द पीपल वी वुड हैव पिक्ड वो ऑलरेडी पिक हुए हैं. सो नाउ वी हैव द लेफ्टओवर्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट. खैर अच्छे बॉलर भी हैं लेकिन अब वहां चल रहा है. हमने सोचा था कि हम उठाएंगे. ऑनेस्टली कल मैं साउथ अफ्रीका वाली लीग देख रहा था तो उसमें रीस टॉपली ने आई हैव बिलीव ही नहीं हो रहा है ऑनेस्टली. अच्छा सैड बात ये है, अब हमारी डबल सैड है बिकॉज हमने सोचा ठीक है नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बोल रहे हैं हम उठाते हैं कोई हाई पेस बंदा. हमने सोचा हम उठाएंगे ना वो बर्गर को, ठीक है. हमने चेक किया, अवेलेबल था, उसे बात की, फला बात की, तकरीबन हम वो था कि चलो नॉट बैड, बर्गर बेस्ट. आज हमें बताया गया कि एक्चुअली उसको भी एनओसी नहीं मिल रही फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो नाउ इवन वो भी नहीं आ रहा. उसको क्यों नहीं दी जा रही है? कोई मैच सीरीज है उनकी क्या? बेसिकली आई थिंक जनरली ये हो रहा है कि साउथ अफ्रीका इजंट गिविंग हिज फास्ट बॉलर्स एनओसीज. निगिडी का भी ये इशू बना था, इसका भी इशू बन रहा है. उनका फर्स्ट क्लास होता है उस टाइम पे, तो वो उनको नहीं दे रहे एनओसीज.
बर्गर का So उनका बड़ा लॉन्ग टर्म एसेट उसको देख रहे हैं बर्गर को, दे गोइंग टू प्रोटेक्ट। yes. So अच्छा, we were आपकी about जब ट्वीट आई थी we ना, were about to pick Islamabad's future brand ambassador, लेकिन वो भी नहीं आ रहा अब। साकिब भाई ने तो वो ट्वीट हम शो आपके आने से पहले बोल दिया था कि ये अली भाई ने ट्वीट की है, मुझे ज्यादातर कंफर्म है कि ये रीस्टॉपली ही होगा। तो ये assumption सही वो है कभी यार। भी नहीं आता, उसका हमेशा कोई ना कोई सीन हो जाता है उसका। अच्छा अली भाई, नहीं, मुझे लेकिन अगर साकिब ये भाई ब्रेकिंग हमने आपने इस पे जिंक्स नहीं किया था कि इतनी दफा कहा है कि रीस्टॉपली, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पे कुछ ज्यादा ही बात होगी, शायद नजर लगा दी। तो जी अली सर। भाई आपने ये ब्रेकिंग दे दी है कि रीस्टॉपली अवेलेबल नहीं है, तो आई नो कि अभी आपने उसको रिप्लेस कर लिया है, तो वो भी ब्रेकिंग दे दें कि आपने अभी नहीं किया replace, किस अभी उसको हमने रिप्लेस अच्छा नहीं किया। अभी अच्छा वैसे भी नहीं किया। वीकेंड चल रही है, हम लोगों से बातें कर रहे हैं अबाउट अवेलेबिलिटी एंड थिंग्स, लोग बीपीएल भी खेलना चाह रहे हैं, डिफरेंट चीजें चल रही हैं, तो अभी हमारी बात चल रही है, बट इंशाल्लाह वी विल पिक समवन गुड। लकीली वी हैड ऑलरेडी पिक क्रिस जॉर्डन, सो ऑलरेडी हमारे पास एक हाई पेस डेथ स्पेशलिस्ट है, सो विली एज पावर प्ले स्पेशलिस्ट, जॉर्डन एज डेथ स्पेशलिस्ट, वी ऑलरेडी हैव। आई रिमेंबर लोग हमारा मजाक कर रहे थे कि आपने इतने फास्ट बॉलर क्यों उठा लिए, अब कदर आई, अब कदर आई है सारों को, हमने तो फास्ट अच्छा बॉलर क्यों मेरा उठाए। क्वेश्चन, फास्ट मैं यही क्वेश्चन आउट। नहीं, मेरा मैं अभी यही क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। हाँ क्या? मेरा क्वेश्चन तो फिर अब who are we looking at as Willy's partner? Like क्या क्या नजर देख रहे हैं अब आप स्ट्रेटजी के हिसाब से? देखिए, एक तो हमारे पास है आफ्ताब इब्राहिम, who had an amazing season national T20 with the new ball and a death. So he is an option. उसके अलावा we have Dhani, who's had an amazing season and he's done really well in the power play for Multan in the past. So he's in great form these days, as you can see with his 7 for today, yesterday. So we have Dhani as an option. We have Aftab Ibrahim as an option. We can go with Khushdir if you need to. We can go with Iftikhar if you need to, if they we have a lefty there. तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है. Even by the way, we have Muhammad Ali Daisy, who many people think is not a particularly good wide ball player, but I've seen him in the national 20. He was unfairly dropped in his last season. He had 4 good games and then he had 1 bad game and he never played again. And he was bowled at the wrong time. I felt, again, मार तो कोई भी खा सकता है यार. But as a very accurate, very high pace bowler, Muhammad Ali is a great find, who did well in the, obviously चलो सिंध प्रीमियर लीग इतनी अच्छी नहीं, but point being उसने bowling अपनी तरफ से अच्छी कराई थी, both at the top and at the death. So we have a lot of good options available. Obviously Reece Topley left-handers का कातिल available होता तो अच्छा होता, लेकिन अब क्या हो सकता है अब. अच्छा इस पे एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ही था कि आप रीस्टॉपली की जो रिप्लेसमेंट लेंगे, क्या आप कोई फास्ट बॉलर ही लेंगे? क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि रीस्टॉपली, डेविड विली Fast दोनों bowler. एक जैसे बॉलर थे, देन क्रिस जॉर्डन भी थे, तो नहीं, 3 फास्ट एक जैसे बॉलर्स, bowler, जबकि अगर आप जॉनसन चार्ल्स को ना लेते तो आपके पास सिर्फ 2 इंटरनेशनल फॉरेन बैटर्स होते। तो वो तो अच्छा किया कि जॉनसन चार्ल्स से वो वाला मसला हल हो गया। तो क्या किसी कॉम्बिनेशन में 3 फास्ट बॉलर, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी कॉम्बिनेशन में आप वैसे भी खिला सकेंगे। खिला सकेंगे, बिकॉज हमारी मेन थिंग वी वांट टू गो विद, बिकॉज इट्स अ रीबिल्ड. हमें अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि हम कौन किसको कैसे खिलाएंगे और क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे. 2 and 2 पे जाएंगे, 2 बैटर 2 बॉलर, जो ओरिजिनल प्लान था. अब शायद हम 1 and 3 पे जाएं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. जब अभी जॉनसन चार्ल्स वोंट बी देयर फॉर द फर्स्ट 3 games, so by the time he comes we have a fair idea of where he's going to fit in. Is he going to go as an opener? Will he go in the middle? Maybe everything is going well and he doesn't start as soon as he comes back. लेकिन हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हमने हमने ऐसे बनाए हुए कि वी कैन प्ले यासिर एज एन ओपनर and play Milan or Riza at 3 and then Charles at 4. We can play Dahani instead of any fast bowler, Gora fast bowler if you want to, because he's in good form. We have 4 emerging players, so we can fit them anywhere in the 11. So we have a very flexible squad, and but I think the current plan would be, depending on foreign players availability for the first game, but most likely हमारा ये होगा, we'll go with Riza and Milan, and then we'll go with Willie and probably Chris Jordan, at least for the first game. Because again, death bowling पे हमारा issue आता है, and we're happy with our. Hopefully when the camp starts in day after, we'll see how Aftab is bowling, how Dahani is bowling, and then we can assess accordingly. अच्छा अली भाई, जो ड्राफ्ट डे होता है ना, वो हमारा पीएसएल का इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज। My favorite day. It's definitely my favorite day. तो जो वो माहौल क्रिएट होता है, तो उसमें अब आप जब प्लैटिनम की पहली या डायमंड की पहली पिक लेके जा रहे हैं, तो कुछ चीजें तो सर्टेनिटीज होती हैं कि आपको पता ही है आप कौन लेके आ रहे हैं, बट एक वो कुछ सरप्राइजेस होते हैं ना कि सर्टेन थिंग्स के आपको यू हैव टू थिंक ऑन योर टोज, या वो उस वक्त आपने बैकअप की तरफ जाना है।
तो उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस था आपका इस ड्राफ्ट में? हाँ, बिल्कुल। हमने 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 बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था to game what other simulate what other teams are doing, and we were mostly correct about the vast majority except one team. एक टीम थी जिसकी हमें अभी तक समझ नहीं आई थी उनका ड्राफ्ट कैसा गुजरा है। एंड साकिब भाई, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू स्टिल इन दिस चैट। उनको प्रेडिक्ट करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। ओह, ही वाज़न्ट देयर। साकिब भाई, you miss my नहीं वो थे बैकग्राउंड में सुन रहे नहीं, वो थे। सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। नहीं That's मैं the बैकग्राउंड one में कुछ team जिसके बारे में हम तमाम चीज़ों में गलत थे, एक्सेप्ट फॉर द वैन वी थॉट एक ऐसा प्लेयर आएगा। उसके अलावा ना, we had no idea what they would pick. Every pick we were like, but why? ये क्यों लिया? उन्हें कीपर नहीं उठाया अभी तक, उन्होंने ये नहीं किया अभी तक। हम कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें। वो इधर भी समझ नहीं आ रही थी अली भाई। यहाँ पे तो एक साहब थे, वो कह रहे थे लिख लो पर्ची पे ये प्लेयर हो रहा है पिक, वो होते ही नहीं था। नहीं, हो गया ऐसा था, लग देन रहा वो है आप लाहौर से ज्यादा रिप्लेसमेंट में शायद आ उनके गया, बारे में वो सोच रहे रिप्लेसमेंट में जाके पिक हुआ। रिप्लेसमेंट में हो गया वो। अच्छा एनीवे, मेरे ख्याल में आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे थे अली भाई, उसी बात कर रहे थे आप भी? नहीं, Saeed Farhan तो was a हाँ। great pick. Again, that was something that we didn't think would happen, but it's a great pick. He was also in one of the players we were looking at, but we were more than happy with Yasser and Tayyip Tahir, because Tayyip gives you the option of playing in the middle as well. And again, I think one thing we were worried about was who is going to be our spin hitter, and for that we looked at Gore option, we looked at local options. Tayyip Tahir's strike rate against spin at as a high level competition is 150. So someone who is more than comfortable playing spin, but if he lose early wickets, can easily go in the first over, second over, because he naturally plays as an opener and has again very high striker against pace as well. He is someone who could even play at number 6 if we need him to, because he can start accelerating from the beginning. Is very strong, and obviously one of the best fielders in Pakistan. So Tayyib was someone I really wanted. अच्छा अली भाई, थोड़े से हमारे साथ काफ़ी लोग लाइव हैं, तो उनके क्वेश्चंस उठाते हैं। पहले तो माजरा जिनसे कि हम सवाल नहीं उठा पाते, असल में वो इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसको तोड़ना और फिर उठाना जो है, और काफ़ी लोग जो है वो रिपीट कर रहे थे, और बहुत सारे सवाल मैं एक्चुअली मॉनिटर कर रहा था। अली भाई सवालों का जवाब देते जा रहे हो, ही इज थ्रोइंग सो मच इन्फॉर्मेशन योर वे, अक्सर आप सुन भी नहीं पा रहे हो कि वो ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं वो जो आप सवाल ज़्यादातर पूछ रहे हैं। अच्छा जी, ये सवाल साकिब भाई ने पे किया, इज देयर एनी ट्रूथ इन रूमर्स ऑफ प्री-ड्राफ्ट Osama Mir leaving? There was, how do I say this tactfully? There were some teams who were incentivizing players with a potential wild card in the draft, who needed local platinum players. So of the multiple players who were offered this, Osama was one of them. So definitely बात चली थी, but obviously Osama is a key player of ours, हमसे बात कर ली and there was no issue. अच्छा, ये कराची किंग्स, और वो टीम कराची किंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं थी। ये है कराची। There was not only there wasn't just one team that needed a local platinum player. So there were many players from different teams being. कोटली के पास तो हसरंगा था ना, अब हसरंगा भी है, उनके पास इब्रार भी है, तो जाहिर बात है। मेरी तो इंडिविजुअल बात है, I'm saying there were at least 4 players जिनसे बात चल रही थी, and समीन भाई ने ट्वीट भी की थी about this also, so there was a lot going on in this draft. अच्छा, ये आपने ऑलरेडी इसको एड्रेस कर दिया, क्योंकि अभी बात चल रही है कि कब तक आपके फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉपली की रिप्लेसमेंट आप जो अनाउंस करेंगे? As soon as we decide. अभी हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया, उससे बात चल रही है अबाउट NOCs एंड टाइमिंग्स एंड सो ऑन। तो इंशाल्लाह जैसे हमें पता चलेगा हम बता देंगे। हम तो मैं बदनाम हूँ PCB में, बिकॉज मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आती है मैं शेयर कर लेता हूँ, जो इज नॉट लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो मुझे हमेशा आ रहे होते हैं, बेचारे मुझे नहीं आ रहे थे टू हिजाब डिफेंस, उसको आ रहे होते हैं, प्लीज टेल हिम टू डिलीट दिस मैसेज, प्लीज टेल हिम टू डिलीट दिस, वी हैव नॉट अनाउंस्ड येट, प्लीज डिलीट। तो मैं तुम्हारा खुला शेयर करता हूं इन्फॉर्मेशन, जो जैसे आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, क्रिकेट की दुनिया, अली शफीक जो है वो एक अच्छे बॉलर है, उनको कंसीडरेशन? Ali Shafiq was with us in our first season, Multan Sultans. This is the team we inherited and we bought after the draft. He was there. He was sensational. He was one of the breakout stars. He got a hamstring injury during the tournament and then didn't play again. But I'm a big fan of Ali Shafiq. हमारे साथ US भी आया था, कई दफा हमारे academy आ चुके हैं for our Catherine Dalton Ian Pond boarding camps, and he's a very competent bowler. Any team would be lucky to have him. अच्छा अली भाई, ये एक सवाल है, ये रियान भाई से अपने मैं इस बात पे कॉन्टेक्स्ट दे दूं।
अगर ये बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हमारे से बात करते हैं और लोग हमारे से पूछते हैं कि ये एक अप एंड कमिंग प्लेयर है, ये अप एंड कमिंग प्लेयर है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 6 टीमें हैं ना पाकिस्तान में, आपके पास जो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आते हैं गोल्ड में ज़्यादातर लोग जाते हैं पैक्ड। तो जब सिल्वर राउंड शुरू होता है ना, यू हैव एवरी सिंगल नेशनल टीम प्लेयर अवेलेबल टू यू इन सिल्वर। अब उन सिल्वर कैटेगरी में विल आई पिक समवन जो अभी करंटली नेशनल टीम में खेल रहा है, या will I pick someone who's an up and coming player? And this is an unfair system for these up and coming players, because who will pick them? Why would they get picked instead? Why would they get picked instead of an established first team player in the national team? कैसे हो सकता है? This can't happen. So unless there are 8 teams, these players will always get ignored in the draft. अली भाई दूसरा ये नहीं अली भाई इसका एक सॉरी फराज भाई, एक छोटा सा एग्जांपल है। आमिर अजमत ऑब्वियसली जितना टैलेंटेड किस्म की उसने अपनी पावर हिटिंग पे पिछले 12 महीने में काम किया है, इट इज अनबिलीवेबल कि उस तरह का टैलेंट आपका इस साल का पीएसएल नहीं खेल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्शंस ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन नहीं फराज है, भाई वो जहाँ वो खेलता है वहाँ लोग गोरे उठा रहे होते हैं या एस्टैब्लिश प्लेयर ऑलरेडी होते हैं। तो जस्ट लुक सेम हैदर अली। हैदर अली अगेन platinum player था last year, amazing player for Pakistan. चलो out of form है जो भी है, the issue with him is his best spot is in the top 3. People have tried to make him a middle order basher, it doesn't work. He's ideally a top order player. किसके पास top order में जगह है for a player who's out of form right now? किसी के पास नहीं. That's why I wasn't picked in the main draft. For example, Ali Shafiq ले लें. Again, I love Ali Shafiq. I probably like him more than anyone else in the PSL does. But when I need to pick a local bowler, I had Ali Shafiq available. I also had Dhani available. So obviously I'm going to pick Dhani. So अच्छा दूसरा अली भाई इसमें क्योंकि आप भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है पीएसएल के, तो ये जो जैसे काफी इस पे बात होती है इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, जैसे आई थिंक आईपीएल में है, तो आर यू इन फेवर ऑफ इट? I love watching the Big Bash. और बिग बैश में ना इस तरह की बहुत चीजें होती हैं। इम्पैक्ट बंदा आ जाता है, एक वो होता है रैंडमली यू कैन हैव अ पावर प्ले whenever you want. So I love this kind of stuff. The more these kind of things are added to cricket, it will only benefit the game and make strategy more effective. So I love these kind of things. बिल्कुल चलें, शुक्र। मैंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हमने ये सवाल किया है, एवरीबडी, किसी ने भी वो जो है ना वो नहीं बोला कि नहीं यार चेंज ना करो, तो एवरीबडी मैंने देखा है कि एक जनरल फील है। सो हम सवाल उठाते रहेंगे व्यूअर्स के। साकिब भाई कहानी हंसी भी होगा इसका। I want players to be mic'd up in the team. I want the camera to be there. I want as much of this innovative stuff as we can in cricket to make it more engaging. I want all of it. अली भी माइक टप वाला सीन जो है ना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीप लाइव उसमें 30 सेकंड का ही डिले होता है, तो वो इतनी बीप डालनी पड़ेंगी उसमें। सो आई नहीं, थिंक आप एक रैंडम प्ले को तो नहीं करोगे ना। आप कहोगे अच्छा जी अब आपकी बारी है, अगले 3 मिनट आप ऑन है, बस। अच्छा वो वाली बात कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ दैट्स नहीं, फाइन। बट इफ यू कैन गेट समबडी लाइक इफ्ती मेनिया ऑन दैट, तो वो तो बहुत ही ओफ एंटरटेनिंग यार, हमने बाय द वे वी सेंट अ रिक्वेस्ट कि प्लीज लेट अस माइक अप इफ वी वोंट रिलीज दिस स्टफ ड्यूरिंग द मैच, बाद में हम करेंगे। तो अभी उस पे पुशबैक चल रही है, बट हम डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजें करें। बहुत मजा आएगा, टू मच फन। अच्छा अली भाई, हमें ना इमर्जिंग वाली कैटेगरी के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, एज यू कैन इमेजिन। मेरे खुद के भी बहुत हैं, बट इतना इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता क्वेश्चन को। तो मुल्तान ने लास्ट ईयर थोड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सीन किया था कि हमने विलिंगली एंड वॉलंटरली 2 इमर्जिंग के प्लेयर्स खिलाए, एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी, जो दोनों just want to clarify, they came, Ehsanullah came in and Abbas came in because Dhani got injured. एग्जैक्टली राइट। लेकिन वो हमने थ्रू आउट द सीजन खिलाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमर्जिंग की कैटेगरी ऐसी है, हम देखते हैं बहुत सी टीम्स अपने अनफॉर्चुनेटली इमर्जिंग प्लेयर्स छुपाने पड़ते हैं बिकॉज देयर इज यू नो ये बड़ा एक इशू रहा है, बट वी प्राउडली गिव देम द प्लेटफॉर्म। तो इस Again, just सीजन to clarify, it may look like we did. एक तो हमने खिलाना ही था Ehsanullah को, और when you have an emerging bowler who domestic में was unplayable and he bowls at 145, तो वो तो खिलाना आसान होता है। हमारी बड़ी बात थी कि हमने अब्बास को खिलाया, बल्कि हमारी बड़ी बात नहीं थी, Dhani got injured and he came in. So I नहीं, ऐसे would love to be the person कि जी मैं जान के I play players, लेकिन कोई भी ना फर्स्ट 11 में कोशिश नहीं करता कि 2 emerging player खेलें। Just put that out there. नहीं एग्जैक्टली, तो क्वेश्चन भी इसी पे था कि बिकॉज ऑब्वियसली यासिर खान का जिस तरह का नेशनल टी20 गया है, आपने आफ्ताब की बात की, फैसल इज कमिंग बैक, वो भी इमर्जिंग का है, एंड लास्टली कैलिस ऑफ कोर्स फाइनली हमारा पिक हो गया। तो इस सीजन आपको इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि 2 इमर्जिंग प्लेयर्स आपकी कॉम्बिनेशन में कहीं? एक मैं ये बात बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर अस हमारे 3 प्लेयर खेल रहे हैं इन दी IL T20, और वो सब लोग हो गए हैं क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड,
बड़ी मेरी कोशिश थी कि वो जल्दी नॉकआउट हो जाए, लेकिन सब अच्छा खेल गए and they've all qualified. So if those players come late, Jordan and I think Usman Khan are in the same team and William दूसरी team में, if they play the final for example आपस में, then we could have only Milan available as a foreign player coming from SA T20. So if that is the case, we will likely have to play two emerging in Yasir Khan as an opener and Aftab Ibrahim as a bowler. नहीं रिजा हेंड्रिक्स होगा फिर भी हेंड्रिक्स अभी हमें कंफर्म बात नहीं है. He might be playing a couple of games in the BPL, तो अभी उस पर देखना पड़ेगा. But again, I am more than happy to play Yasir Khan as an opener instead of Riza for the first game. He's been in great form and definitely deserves a start. I am more than happy playing Dahani instead of a foreign bowler for the first game. He's again in great form. अली भाई, आपके फैंस का सवाल है, आप क्योंकि आप you're all for fan interaction and innovations, तो ये कुछ इस तरह कई सवाल उन्होंने किए बिलाल ने. ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इनिशिएटिव हो जिसमें फैन इंटरेक्शंस हो, मेंबरशिप हो और Yeah, this is something I want to do so badly. सिर्फ मसला ये है कि PCB again, who I'm obviously one of the stakeholders, but I don't have a great relationship with them these days because जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो obviously वो उस पे पानी डाल देते हैं. जो हमारे medical issues चल रहे हैं उस पे हम criticize करते हैं, फिर वो हमें छुपाते हैं. Anthem पे भी हमारे people know कि हमारी वो misgivings थी. But this is the kind of stuff that cricket needs and the PSL needs. क्राउड के साथ एंगेजमेंट, प्लेयर आए देखें, कंट्रोल चीजें होनी चाहिए. लेकिन आपको इवन फॉर माय ओन डिजिटल टीम कमिंग टू द टीम होटल अजाब है, अजाब. ट्रेनिंग ग्राउंड पे हमने अपने जो हमारे वो एलीट स्क्वाड के हमने प्लेयर डाले, हमने लिटरली बैक करके उनका नाम डाला एज नेट बॉलर ताकि वो वहां आ सकें. तो हमारे अपनी प्लेयर्स को हमें मुश्किल है कि उनको हम लेके आए टू द ट्रेनिंग. तो फैंस अभी दूर की बात है. So definitely PCB needs to rethink how they do stuff because this is just injustice to the fans. तो ये आप बात करें, ये जो hindrances की आप बात करें, ये ज्यादातर security से related hindrances हैं. Security भी आती हैं, but you can देखें यार, when there's a will there's a way. अब भी हमें लगता है कि उनका कोशिश ये होती है कि देखो बस हमारी बे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हमें टूर्नामेंट कराना है, हमें लोग कोई तंग ना करे, हम बस टूर्नामेंट करा लेंगे और बस तंग ना करो हमें. और हम कह रहे हैं हाउ कैन मेक इट बेटर. वो कह रहे हैं नहीं, ये हम बस कर लें, दैट्स आवर मैंडेट, हमें तंग ना करो. ये है ना उनका लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें अली भाई, not to be somebody who will ever defend. Again, I'm PCB members if you're watching me, I swear मैं आपकी बुराई नहीं करना नहीं चाह रहा. ये खुद बस नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से सिलाई नहीं करना चाहता. हमारी वैसी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन सब ठीक है. not to be somebody who will ever defend PCB, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि वहां पे नदीम भाई से भी यही बात की थी हमने कि भाई वहां पर हर रोज एक नया आदमी आके बैठा हुआ होता है. एक दिन आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने कोई चीज तय कर ली, अगले दिन एक नया that's a separate issue that goes on. The person at the top, it's the people who are managing the event. वो तो सेम हो गया. उनके लिए भी उनके तरस आता है बाजारों के ऊपर. उनकी टीम छोटी होती रहती है, कोई नए लोग बाहर से लेके नहीं आते, ज्यादा काबिल होते हैं. So they're already overtasked with stuff they have to do. So बेचारे in their frantic moments they think देखो हमने बस ये टूर्नामेंट कर ली ना, बड़ी बात होगी, तो आप हमें क्यों एक्स्ट्रा चीजें करवा रहे हैं. मैंने ऑलरेडी so stressed out. जो चीज है इसी पे बिकॉज मैंने लास्ट ईयर मुल्तान का और कराची का जो कराची में जो मैच हुआ था नेशनल स्टेडियम, वो अटेंड किया था. तो टेलीवाइज्ड ऑडियंस के लिए तो वो एंगेजमेंट का थोड़ा worst stadium on earth, Karachi Stadium. Worst mahal, worst place to watch a match is Karachi Stadium, no doubt. मैं कोई पोलाइट तरीका ढूंढना चाह रहा था ये कहने का. I as even at any and whenever I've even been part of Multan Sultans, I've mostly watched matches from the crowd. So even when I was in Dubai, I used to do it. Even Pakistan, I do it. Hanif Mohammed enclosure में बैठ के देखा था. आगे 10 फुट का जंगला है. There's 100 feet between you and the jungla, and the people are just standing there. आपको नजर भी कुछ नहीं आ रहा. ऊपर जाते हो, आपका everything is covered, so you can't even enjoy the weather there. Absolute worst experience I've ever had is Karachi, and multiple times जब हमारी टीम जाती भी कराची में, उसको skip कर लेता. मैं देखो, I'm not going to take the trip to Karachi just to watch it in that stadium. तो मैं बेहतर घर बैठ के अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ देख लेता हूँ. So absolute worst experiences. ये एक्चुअली कितने अनगिनत कराची के जो मैच गोइंग फैंस हैं, उनकी आवाज है. मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह PSL की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है, तो फ्रेंचाइज ओनर्स ही नहीं, PSL की मैनेजमेंट. I've already said too many things against PCB. Please मुझे और अभी हमारी कॉल अभी इमिनेटली एक इशू बनने वाला है जो आप लोगों को भी आएगा. Anyway, तो moving on.
तीन कराचियाइट्स के सामने आपने कराची के स्टेडियम को पुट डाउन किया, लेकिन हमें से किसी ने रेजिस्ट नहीं किया क्योंकि हम सब उस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। सो आई एम ऑल फॉर इट, क्योंकि कराची, ऑन अ सीरियस नोट, कराची इतना आपका बड़ा मेट्रोपॉलिटन सेंटर है, आपका स्टेडियम तो वहाँ पे एग्जाम्पलरी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है अली भाई कि अगेन लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है फंड से, क्योंकि अब तो वो बैंक ने स्पॉन्सर भी कर दिया, बैंक के नाम पे हो गया। तो आई डोंट नो कि एलोकेशन फंड्स की क्या हो रही है, पीसीबी ऑटोनोमस बॉडी रही है। सो designed so badly with the massive track in between the things and the junglas. When you watch a match, again, I don't know if you guys have done yet or not. When you watch a match in Pindi or Multan, you are on the ground. The crowd is on the ground. हर चीज आपके सामने, you're part of it. कराची में जाओ, it's like you're watching a really zoomed out TV और बुरा मौसम होएगा. So मैंने हम्म. कराची में मुझे साकिब भाई को याद होगा कौन सा पीएसएल का साल था, बट ज़ल्मी और इस्लामाबाद का फाइनल था पीएसएल का। वो मैंने देखा था कराची में, जावेद मियादाद स्टैंड पे मैं था। तो मेरे सामने एक बड़ा सा पिलर था, Yeah. और मैं आई थिंक आई वाज इन रो 12 or 15 at the time, but the good thing was that there was a TV in front of us. तो एक टीवी उन्होंने लगाया हुआ था, तो हमने वो पूरा मैच टीवी पे देखा। हमें सामने ग्राउंड में भी नजर आ रहा था, ऐसा नहीं है, बट आपकी जो स्टेडियम का एक्सपीरियंस है, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। एक तो ये कि आपको खाने पीने की ले जाने की तो कोई इजाजत नहीं है, लेकिन बाहर भी कोई खाने पीने की जगह नहीं है। बचपन में आई यूज्ड टू लव गोइंग टू गद्दाफी स्टेडियम। वहाँ ऊपर स्टैंड्स होते थे, आइसक्रीम मिल रही है, बर्गर, पिज्जा हट के स्टाइल वो होता था, खाना मिल रहा होता था, जी। बहुत मजा आता था। रियली गुड एक्सपीरियंस। इमरान खान रोज में बैठते थे, मजे करते थे। और अब तो ना खाना होता है ना कुछ। अगेन सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और अगेन वही बात है कि अगर पीसीबी में लोग हुए ना कि देखो, इफ दे सिट डाउन, अगर एक मीटिंग हो जाए, अगेन पीसीबी बुराई कर रहा हूं, आई एम सॉरी गाइस, बट अब क्या हो सकता है। अगर पीसीबी मैनेजमेंट बैठे और सोचे कि देखो, व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर द टूर्नामेंट, वो सोचें what are the things that can we do to make the tournament better. What are the things? Let's brainstorm. सोचो कि हम स्टेडियम बेहतर कैसे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, how can we engage with the fans, broadcast, how can we do that. बस सोचें। वो सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि अच्छा ये हमारा टास्क है, टू डू लिस्ट है, हमने इसको पूरा करना है, एंड देन दैट्स अबाउट इट। क्योंकि और सारी वो आखिरी वक्त पे हो रही होती है ना, सारी चीजें आखिरी वक्त पे हो रही थी। लाइक यू हैव फुल एयर टू प्लान अ टूर्नामेंट। पीएसएल आपको पता है ये विंडो है, इसमें में करना है, यू नीड टू स्टार्ट इट एज सून एज दी वन पीएसएल एंड्स। लेकिन क्योंकि हमारे किसी को बात नहीं करनी, बहुत मेरा मूड भी Yeah, खराब हो जाता है। कंसिस्टेंसी ही नहीं है, लोग नहीं है, लोगों को ये नहीं पता होता कि वो अगले महीने है कि नहीं है। सब दुश्मनी हो रही है। yeah, So, Ali bhai, I love you. बाकियों को लव ज्यादा मेरा नहीं है। he has said already too much। लेकिन सिर्फ स्टेडियम एक्सपीरियंस की बात अली भाई आप जो कर रहे हो, मैंने अच्छा पाकिस्तान में सिर्फ कराची में ही देखा है, तो मैं वाकई में पिंडी वाली बात नहीं समझ सकता कि वो कितनी। मैंने ये जरूर सुना है कि लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है उसमें बाउंड्री में, और क्योंकि वो मल्टीपर्पज स्टेडियम बना था इनिशियली, शायद आई बिलीव कि उसमें बहुत गैप है। मैं यहाँ पे अभी फुटबॉल मैच देखने गया था न्यूयॉर्क में, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल का। अब उसमें 1,20,000 बंदा था, लेकिन 1,20,000 बंदे में भी एवरीबॉडी हैड सच अ व्यू कि लग रहा था कि आप ग्राउंड के ऊपर ही हो, क्योंकि शायद तो बना हुआ इस तरह है स्टेडियम। और वो भी सॉरी सॉकर या फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, वो मल्टीपर्पज स्टेडियम है। वो जो बंदा बाहर खड़ा हुआ था मुझे बता रहा था कि आई थिंक अमेरिका का या दुनिया का सबसे बिजिएस्ट अरीना में से वो एक है, मेट लाइफ अरीना है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन और वो हमारे यहाँ ये कि अली भाई, अगेन जस्ट टू फिनिश ऑन द स्टेडियम एक्सपीरियंस, हम लोग एक चीज बनाकर छोड़ देते हैं एंड वो बस चलती रहती है, उसी पे चलती रहती है, नेवर इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो बट उम्मीद है कि जैसे हमारा पीएसएल प्रोडक्ट है ना, आप जैसे लोग स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, सो इट विल गेट बेटर, इट विल गेट बेटर डेफिनेटली। जी साकिब भाई। जी अली भाई, बैक टू द ड्राफ्ट। जब धानी को आप रिटेन नहीं कर सके थे, तो वर यू थिंकिंग कि आप सिल्वर में, यू वर श्योर कि सिल्वर में आप दोबारा जाके उनको कर पाएंगे? क्योंकि गोल्ड में भी आपने चांस लिया और गोल्ड में जल्मी की एक पिक थी और जल्मी ने बॉलर ही उठाया वहां पर, मगर जल्मी अगर चाहती तो शायद धानी भी उठा देती। तो कोई अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ? नहीं, we knew they wanted to pick a Samani shot. So if we knew when they pick a local bowler, it's going to be Samana shot. So we weren't worried. अच्छा क्वेश्चन भी आया हुआ था। एनीवे अली भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपने कुछ दिन पहले, आज या कल में, आपने एक ट्वीट की है डेटा ड्रिवन अप्रोच के ऊपर, कि जो आपने ड्राफ्ट पिक्स की हैं दे वर बेस्ड ऑन द डेटा, और डेटा ड्रिवन आई नो कि लेथन लेमन भी वहां पर थे, मगर आपने कुछ स्टेडियम की बात भी की है कि हमने के स्टेडियम्स को भी देखा कि हमारे किस स्टेडियम में कितने मैचेस हैं।
तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हमें बताइए कि स्टेडियम को जब आप रखते हैं तो वहां पर स्टेडियम की बेस के ऊपर बैटर्स को या बॉलर्स को या किस तरीके से कंसिडर करते हैं कि ये बॉलर मैं सिर्फ मुल्तान स्टेडियम के लिए ले रहा हूँ या ये बैटर मैं सिर्फ पिंडी स्टेडियम के लिए ले रहा हूँ, उसके बारे में जरा डेटा ड्रिवन अप्रोच बेस्ड ऑन द स्टेडियम के बारे में बताइए। देखिए, यू हैव टू पुट ऑल द डेटा इनटू कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट कि किन स्टेडियम पे खेलेंगे, लेकिन किन पे खेल चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम जब ऐसे सवाल पूछते हैं, हमारा जो ग्रुप है स्ट्रेटजी ग्रुप का, मैंने अभी आजकल देखें, व्हेन वी लुकिंग एट हु आर वी रिप्लेसिंग रीस्टॉक पीपल, आई गिव यू लाइव एग्जांपल। हमने ये सवाल पूछा है कि हु इज द गाय हु हैज द बेस्ट स्टैट्स इन टॉप एंड टेल, पावर प्ले एंड डेथ, एंड स्पेसिफिकली बताओ कि हु हैज अ गुड इकोनॉमी इन हाई स्कोरिंग गेम्स एंड हाई स्कोरिंग पिचेस। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम वैसे डेटा आ जाता ना कि ओ इसकी इकोनॉमी है, यू नो 7.5 फॉर एग्जांपल, दैट इज अक्रॉस ऑल द होल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द गेम्स ही प्लेड। हम फिल्टर डालते हैं कि जो हाई स्कोरिंग गेम्स हैं, जो हाई स्कोरिंग पिचेस थी दैट वेंट अप अबव 200, सिर्फ उसका डेटा निकालो एंड उन मैचेस में इसकी इकोनॉमी क्या थी। सो दिस इज हाउ द ग्राउंड्स गिव कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन द फ्यूचर बट इन द पास्ट आल्सो। सो इस तरह के हम चीज सोच रहे होते हैं। सो वी लुकिंग एट समवन करंटली विद वेरी हाई पेस, and in high scoring games he's done well because his high pace has been very effective in that time, because obviously high scoring pitches पे आपके slow medium वाले ज़्यादा अच्छा फेयर नहीं करते, you have to have something different which is pace. So given that हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं and as we see the trend कि हमारा ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो रही है, we want to get someone with high pace. So this is the kind of stuff we look at. अच्छा, ये बहुत ही वो खाना पूरी वाला सवाल हमेशा आता है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों हमेशा करते भी हैं। पर जैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट इतना नहीं है, लेकिन फैंस का होता है, तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, क्योंकि आपने तो किट रिलीज कर दी है नई वाली। तो क्योंकि मुल्तान उस काफी काफी रेजिस्टेंस थी काफी अरसे तक नई किट पे, जो कि इसके मैं हक में था, क्योंकि बड़ी खूबसूरत जरूरत क्या है कि करने की, लेकिन आपने फाइनली चेंज की है। तो फैन को जानना चाह रहे हैं कि उसके पीछे कोई था, कोई पर्पस था, कोई मकसद था, कोई प्लानिंग थी। यस यस डेफिनेटली। देखिए, हमारी अब कोशिश थी को एक, हम चाह रहे थे कि हम अपना जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो हमारी अपनी ब्रांडिंग है, जो हमारा एंथम होएगा, everything we're going for more young modern vibe. So we've done the traditional stuff, for many years now. We had Aula Isa Khilwi sing a song. We had a BB. Even the last song had more of a local flavor to it. Even the video, even the song itself. So we're now consciously deciding, we've done that part. Now we're going to focus on a more young, youthful vibe in terms of everything. So our social media presence now, you can see, has a much younger voice now. जो हम बातें करते भी हैं, मीम शेयर कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं. So even that, the kit itself is a little more modern vibes. So we integrated Multan into it by जो होते हैं टोपोग्राफी के जो लाइंस होते हैं ऑफ मुल्तान, हमने वो लेके डाले हैं on the kit. So we have still Multan representation on the kit, but in a crisper, cleaner vibe, which is more usable. So हमारा गोल ये कि we want to make stuff that people will want to use on a regular basis. It's not just कि जब हम Multan Sultan shirt pehne for the game, but even the training kit and even the stuff we're wearing, we're keeping it such that this has become a lifestyle thing. And also as anyone who watches football knows, this away kit we have is very much inspired by AC Milan's third kit. So हम जो करते हैं कि inspired by Milan, made in Multan. मुझे तो मिलान का आपका तो याद है। आपने मेरी ट्वीट देख ली क्या कल? आपने डेविड मिलान को सिर्फ इसी चक्कर में लिया होगा कि उसका एसी मिलान से नाम मिलता जुलता है। सो आई नो यूर Just realize the connection, मैं सोचा भी नहीं था पहले। तो मुझे इस बात अच्छा, उसमें पिंकिश टोन जो थी, वो कल मैं ट्विटर स्पेस सुन रहा था, तो उसमें दुनिया ये कह रही थी कि जरूर हिजाब ने वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से थोड़ी सी पिंकिश टोन डाली है, और उसी वजह से आज का जो मैंने वैसे बाय द वे, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप काम भी करते हैं, आज का मैंने जो थंबनेल क्रिएट किया उसमें पिंकिश टोन डाली। मैंने कहा कि यार अब उनकी अवे किट में थोड़ी सी आ गई, तो मैं भी डाल देता हूँ, तो उसके बारे में बताइए। I'm not even sure hijab likes pink as a color, so I definitely it was definitely the AC Milan kit that we were inspired by. So, but funny था, initially when I told the designer कि देखो, this is the inspiration, the AC Milan kit, आप मुझे ऐसा कोई बना के दो. उन्होंने बना के दिया, was 95% the exact same kit. मैं कहा, guys, I don't want इसी का मुझे twin नहीं चाहिए, मुझे इसकी cousin चाहिए. So it should be similar but not the same. So cousin is आपका इशारा इस्लामाबाद की तरफ है वैसे अली भाई, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, वो तो 3-4 क्लब से इंस्पायर उनकी तरफ से वो हो गया, वो तो डेफिनेटली होगा। अच्छा, मैं तो ट्विटर पे बहुत पब्लिक कह रहा था कि दिस इज द ग्रेटेस्ट किट आई हैव एवर सीन, तो ऑब्वियसली मैंने उसको कॉपी करना था ना। नहीं, अब इस्लामाबाद वाला तो बड़ा अजीब सा वैसे हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। आपने बहुत उसमें करा है, वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन दे हैंडल इट वेल।
I think they handled it. क्योंकि अच्छा हम लोग उस वक्त in the process of the interview थे जब ये whole thing got loose. So anyways, yeah, but they've anyways, let's just leave Islamabad out of it. उनकी kit का जो भी हुआ, they've handled it themselves. But Let's just on the topic with Islamabad, I definitely think they have the strongest team this season. उनकी तो वो तो 11 वो पता नहीं तो कैसे हर बनाएंगे साल भाई, उनके तो 2-11 वो टीमें बना देंगे उनकी बहुत ज्यादा। मैंने उसका अली भाई जो एग्जांपल दिया था, मैंने वही दिया था, वो जो लोडेड फ्राइज नहीं होते हैं उसमें भरे जाते हैं, इधर से फ्राई Ah, गिर रहा है, इधर से आलू गिर रहा है, इधर से जलेपिनो गिर रहा है, लेकिन वो डाले जा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा the प्लेयर fact that they got Imad Wasim for Hassan Ali, yeah, what an amazing trade for Islamabad. So they have practically have everything in the team right now. कोई कमी नहीं रही. और अगर नसीम भी fit है फिर तो amazing होगा. नसीम है, पर उनके And पास also, on this point, I think there's something I guess the बाकी हमारे fans सुने उनके भी relevant होगी. जो काफी debate चलता रहता है in I see it this a lot in PSL. I thought to give it talk about today. There's a big focus put on कि जो general managers हैं उनका कितना role होता है in success, और फिर जो coaches हैं उनका कितना role होता है in success. I think with Islamabad, there was a lot of time when they didn't really have like an established coach since Dino left. Uske baad na, you can see their success they weren't really getting that much success. I think they were the only team who hadn't played a final in the past, so many years. So definitely Mike Hassan ke aane se, no doubt fark padega. Again, general managers जो होते हैं, they are very effective, very influential, and a good general manager can make or break a team. Absolutely. But once the tournament starts, draft के time पे ये strategy चीजें करना, the managers are crucial. As soon as the tournament starts now, that's when you see the coaches come into their own. And that's when they provide something which these non-cricketing GMs cannot do. So I'm very happy for Islamabad that they've gone with the proper coach, an established coach after a while. Even though Azhar Mahmood obviously is a great friend of mine, that was his first gig as a head coach. He also feels obviously maybe he feels he wasn't as empowered as he wanted to be. But with Hassan coming in, he came in, "Ke beta, I'm going to be empowered." So that's the feeling I get, and I'm very happy for Islamabad that they've taken this step. And again, बाकी टीमों के साथ भी ऐसे होना चाहिए, because you can see how a good environment benefits everyone involved. So even Rehan will also, even though he's obviously very experienced, even he will benefit having Hassan there and being a part of his team. वही तो अली भाई, आपकी ये जो बात है वैसे बहुत जैसे टच ऑन इट ब्रीफली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि अब जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पहले 2 टाइटल जीत गई, अब उसके बाद कोई वजह ही है कि वो नहीं सक्सेस है। अब वो अगर सेम चीज को रिपीट करते जाए कि यार हम नहीं जीत जाएंगे, तो उन्होंने आइडेंटिफाई तो किया कि भाई कुछ मिसिंग है, उसको इनकॉर्पोरेट किया, और अब ऑब्वियसली आपकी बात सही है कि काफी तब्दीली हो सकती है। दूसरा ये कि पीएसएल के सीजन में मैं एज अ होल देख रहा था, सो कि देखिए कराची रिबिल्ड हो रही है, आपने भी बोला कि मुल्तान एक तरफ से दोबारा से शुरुआत कर रही है, लाहौर के अंदर कुछ उनके की प्लेयर्स मिसिंग है, ठीक है, 2 दफा टाइटल वैसे भी तो 3 ये हो गई टीमें। इस्लामाबाद भी बहुत स्ट्रांग है, क्वेटा आई मीन ऑन पेपर एटलीस्ट these two teams, क्वेटा भी also rebuild का ही कहेंगे sort of, Also have a new coach now. हाँ, शेन वॉटसन उधर आए हैं उनके पास, तो I Definitely think benefit everyone. this PSL season I think बहुत ही कोई engaging 100%. interesting किस्म का सीजन होने वाला है ये। सबसे ज़्यादा different ये चला, given that all the rebuilds happening. And again, I just want to say one word for Hyderabad at Karachi. I had no idea that वो इतनी ज़्यादा changes, इतने बड़े फैसले करवा लेगा in his first season. बहुत बड़ी बात है. Kudos to him. Because I did not think he'd be able to do this. के Amir out, Imad out, new captain in. Huge, absolutely huge. Big changes, जिस पे हमने बात की हुई थी हैदराबाद से, और वो खैर anyways वो उस पे आप By the way, Heather is someone who has really grown as a general manager. So he was the general manager for Multan Sultans for the 2 years before we did our draft. So in both years, even though Heather was there, they came 5th and 5th. So in the first meeting we had, and I remember Heather being very active then, and I've known Heather for many years outside of cricket as well. I mean, his brother's a friend of mine and so on. So when he was there initially, the kind of stuff that he would talk about, the ideas he would give, or the kind of things he would talk about, because obviously Andy had come in, Nathan had come in, Cricket Viz wahan log hote the, to the stuff he would talk about after he had those years with them, Zameen Asmaan ka fark. And all credit to Heather, who absorbed all of that. So again, he has done
tremendously well for Multan Sultans, integral cog, and he was going to take all that knowledge, all that experience he gained, and upskill himself during that time with Andy and everyone, and will take that to Karachi. So I'm really excited, and I think Karachi will come to success much faster than people think they will. आई होप सो टू अली भाई एज अ कराची फैन आखिरी और जितना भी आपने अभी अच्छे वर्ड्स हैदर भाई के लिए बोले एज अ मैंने बोला ना एज अ कराची फैन वी वर लुकिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग फॉर अ न्यू स्टार्ट और लॉस ऑफ आमिर लॉस ऑफ इमाद एंड एवरीथिंग वो बड़े लॉसेस जरूर हैं लेकिन साकिब भाई ने काफी दफा मुझसे बात की मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया है फॉर द ग्रेटर गुड मैं वो छोटे शॉक्स सहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए फैसले करने पड़ते हैं जो कि आप लोगों ने भी हमेशा किए हैं और अभी भी किए हैं आपने तो एनीवेज शो के साकिब भाई आखिरी 10 मिनट की तरफ चलते हैं लोगों के कुछ सवाल उठाते हैं जवाब तो दें उनका कोई बात ही नहीं सुनी उनकी बिल्कुल बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सवाल साकिब भाई मैं उठाता हूँ उठाइए आपने उठाए ये मैंने एक उठाया है देखना आप if Yasir and Riza was first priority as opener with Rizwan then why you pick Usman Khan कोई fast bowler देख लेते So obviously we already picked 3 overseas fast bowlers, so we didn't need a 4th one. Usman Khan ka fayda ye hai ki he can play as an opener, and he's done for Multan Sultan very successfully. If you look at him playing internationally, he plays at number 4. He's played number 6. Abhi currently khel raha hota hai. So he gives you an option of an explosive hitter against pace and spin as an opener, as a middle order, as a finisher, and he's a backup keeper. So having Usman in the squad is very very handy. And Yasir, it wasn't कि Yasir pick करें because he's going to be our opener for every game. It's that we have an amazing emerging opener. We have an amazing emerging fast bowler, an amazing emerging spin bowler, and we have now a very handy emerging all-rounder. So the goal was कि हम जब जिस position पे हम emerging player खिलाएंगे, we should have the best for that position. And Yasir is definitely the best emerging opener in Pakistan today. अच्छा जी अली भाई ये एक सवाल है ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है जो हर ओनर से हर टीम उससे पूछा जाता है कि ऑक्शन मॉडल की तरफ आपके क्या ख्यालात हैं कि जा सकती है हमारी लीग या फीजिबल होगा जा सकती है देखिए I have no issue with an auction model. If people think that's more exciting, I have no issue with it. I like the draft system, nice and simple. But again, auction will be more fun for sure. ज़्यादा more surprises come in. I think ये लोगों की जो thought है ना कि auction की वजह से ज़्यादा प्लेयर आएंगे पैसों की वजह से नहीं आ रहे. A lot of players who are coming to us are getting more money from us than they're getting from the IPL. The main issue is पहले फिर एक बीपीएल भी हो रहा होता है फिर बहुत शॉर्ट विंडो के लिए आप अवेलेबिलिटी होती है पीएसएल अब एकदम आईपीएल शुरू हो जाता है अ प्लेयर कांट डू ऑल 3 रेगुलरली उनके बेचारे को बीवी बच्चे होते हैं उनकी बॉडी है वो थक जाती है दे नीड टू रेस्ट बिटवीन these 3 tournaments and when is the ideal rest you play one you rest and you play IPL अली भाई ये एक है सॉरी फराज में काट रहा हूँ इसी से फॉलो अप मैं असल में जानना चाह रहा था अली भाई की सोच इस बारे में I think I got disconnected एक मिनट चेक करें अली भाई can you hear us okay I can hear you now okay अच्छा अली भाई मैं असल में पूछना चाह रहा था इसी से फॉलो अप कि हाउ डू यू सी दिस आरपीएसएल इवॉल्विंग क्या इम्प्रूवमेंट्स हम देख सकते हैं इन द सेंस कि हमारी पीएसएल इस तरह बढ़े कि हमें वो प्लेयर्स जो हम नहीं देख पाते या नहीं देख पा रहे इन पीएसएल वो किस तरह क्या हमें नई विंडो देखनी चाहिए क्या और इन द नेक्स्ट 5 years हाउ डू यू सी दिस मॉडल इम्प्रोवाइजिंग फर्दर This is a big question. This is a absolutely huge. This is a huge question for PSL because the biggest problem right now is not how much we're paying the players; it's simply the timing of the PSL. Because we have ILT20, which pays very well, and people love going to Dubai and playing there. That happened before us. फिर हमारे दरमियान में हम भी हो रहे होते हैं बीपीएल भी हो रहा होता है और उसके बाद फिर फौरन आ रहा होता है आपका आईपीएल प्लेयर लेना चाहता है ब्रेक इन 3 टूर्नामेंट में आईपीएल ऑब्वियसली प्रायोरिटी होती है सो आइदर दे कैन सो द आइडियल फॉर देम इज यू प्ले ILT20 और SC T20 then you take a 1 month break spend time with the family and then you go for 2 months to the IPL this is the main problem हम उनको डबल पैसे भी दे दें they need उनकी वो इंसान है बेचारे उनके बीवी बच्चे भी हैं they have to give their family time they have to give themselves time to rest and IPL obviously is the biggest tournament so naturally हमारे ऐसी चीजें इशू आएंगी अगले साल because चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है हमारे पास in Feb and then obviously मार्च में रमजान है
it is likely that we'll have an overlap with IPL, which I think, by the way, is not a bad idea. अगर IPL auction के बाद हमारी draft हो, a lot of players will be available and they'll all be free because there's no other tournament happening at that time. So I don't mind us overlapping with IPL. कोई हमारे broadcast पे issue भी नहीं चलता, ज़्यादा हमारा ही local चलता है हमारा काम. So कोई बात कर, there's some talk कि हम इसको move कर लें to a different window, maybe September. But again, September में गर्मी होती है यार, कौन जाए cricket match देखने September में? So I'm very happy. I don't mind an overlap with IPL at all. अच्छा, ये एक सवाल आया है कि क्या कह रहे हैं ए रेटेड सिंबली भाई, कैन यू शेड लाइट ऑन मैकडर्मट नॉट गेटिंग पिक्ड? Moreover, last year Hyder bhai said MS is Multan Sultan is looking to invest in foreign league and women PSL. ऐसे कोई plan है आपके? Again, Ben McDermott, good player, solid player, young guy, keeper, batter. You know, I've known him well, and पता नहीं कैसी जो pick again जो pick हो रहे होते हैं लोग, you want to pick more established players, more national team players. So again हमारे local players pick नहीं हो रहे होते, तो उनकी भी जो up and coming होते हैं वो भी कम ही pick होते हैं. Regarding expansion plans, definitely we are very focused on not just having the one team here, but having this as the base cricket asset, and then using the South Asian team as your base, and then expanding to other leagues. बिल्कुल हमारी इस पे बिल्कुल फोकस है और कोशिश करेंगे. और women's PSL तो मैं बहुत सालों से चाह रहा हूँ कि होनी चाहिए यहाँ, तो जैसे भी आएगी इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारी टीम होगी. Women PSL पे ब्रीफली अली भाई, हमारे पास इतने टैलेंट है, इतने प्लेयर्स हैं 100%. 100%. देखिए, it won't be कि आपने women's PSL कर लिया and that's it. अभी इनिशियली बात हो रही थी that will start with 4 teams. तो 4 teams तो डेफिनेटली आराम से बना सकते हैं, especially with foreign players coming in. And mainly you need to have a pathway system कि domestic में जितने आपके पास regions हैं, अभी खैर बहुत ज़्यादा regions हो गए, but if you go back to the 6 region model जब आपके cricket association थे, what I was pleading to वसीम खान सामानी at the time was कि आप इंसानों को mandate दें कि 1 साल के अंदर they have to make a women's team. सब बना लेंगे. They'll all make it. अच्छा, ये इस पे गलबन आप इसको एड्रेस कर चुके थे, लेकिन व्यूअर्स क्वेश्चन आया अब्दुल रहमान जट का कि जॉर्डन और डेविड विली तो आपके पास तो फॉरेन प्लेयर्स हैं, तो जिमी नीशम की तरह के ऑलराउंडर की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए एज अ रिप्लेसमेंट जो अभी आगे आप देखिए हमारे बैटिंग ऑर्डर को, तो हमारे ऑब्वियसली आप ले लें टॉप 6 हमारी बैटिंग आ गई विद इफ्तिखार एंड खुशदिल एट 5 and 6, let's say. Then at 7 you have Willie. At 8 you have either Jordan, or even if you don't have Jordan, let's say you have Jordan at 8. Then at 9 you have Osama Mir who can bat. Then you have Abbas Afridi who can also bat. Then you have Aftab Ibrahim who can also bat. So we're batting till 11. All rounder लेके हम क्या करेंगे? इतनी जब डीप बैटिंग है, आप स्पेशलिस्ट बॉलर ही उठाओगे. मेक सेंस. वैसे कहानी चला गया, मुझे हैरत है इफ यू अगर आपने कहानी को इफ यू हर्ड हिम इनफ, तो मुझे लगा था कि वो कम से कम 3 से 4 सवाल तो खुशदिल के लेके करेगा आप पे, क्योंकि हम लोग को शक है कि खुशदिल का जो एजेंट है ना, कहानी उसका एजेंट है. तो एक बात बता दूं, initially ना when we were talking about which players we want to keep with Nathan and Freddie and Andy, Freddie ने एक stat बताया. By the way, even some of our हम थोड़ा बहुत थे कि इसको how important is it, because we had so many diamond players, हम सोचते थे किसको रखें. Freddie Wild ने एक stat बताया, वो लिखता है ना क्रिकेट पे इम्पैक्ट देखता है. उसने कहा खुशदिल शाह is one of the few players on earth who has a positive rating in every single aspect of his game. कहते he has a positive in his batting, he gives a positive thing with his bowling, and he gives a positive score with his fielding. In every phase he is positive. And ये कहीं नहीं होता, हमेशा किसी का एक नेगेटिव कोई पॉजिटिव होता है. कहता है he is one of the few players, गिने चुने कोई 5 है दुनिया में आजकल, who have a positive impact in every aspect of the game. तो उसने कहा था खुशदिल is untouchable. हमने कहा सर खुशदिल वैसे भी जस्ट ऑन अ सीरियस नोट, खुशदिल के वाकई में मैंने ये जरूर, खुशदिल के ऐसे बहुत सारे प्लेयर टू बी ऑनेस्ट हमारे पास हैं जो कि एक जब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं, उनको लगता है कि उनको एक बैकिंग जिस मुख्तलिफ किस्म की मिल रही जो कि शायद नेशनल लेवल पर फॉर वन रीजन और द अदर नहीं मिलती, तो वो परफॉर्मेंस लेवल क्योंकि अली भाई आपको भी ये पता है, आप इसमें थे कि कोई भी प्लेयर अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर बना हुआ है वो बाय लक नहीं बन सकता. लक होती है, स्किल सबसे पहली चीज होती है, स्किल लेवल. सो देयर इज अ स्किल लेवल दे पोजेस, दैट्स द रीजन दे आर देयर. Then it comes down to here. मैं भी आजम खान का सुन रहा था इंटरव्यू, शुएब मलिक कर रहे थे, जिसपे उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया एक रोल, और मैं आई वाज हाफ मोर देन हाफ अग्रीइंग विद हिम, क्योंकि मैं उसकी बात समझ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहा है.
So I'm hoping कि आपके probably the happiest words. Just one thing with Khushdil. He had this best season of his life in Southern Punjab when he was unplayable. He scored the fastest century in Pakistan's history. Usme obviously we were playing him a little higher because I don't feel he's the kind of guy who can come and start hitting from the first ball. Now he's developed because he's been used in that role so long. But he used to come out at number 4, and aksar hamara hota, he would come in bat in the power play because we would have a batting collapse. So if you give him time, he's an exceptional player. And the biggest difference, he used to play with this massive, extra long Darren Sammy bat, which he was like, बस Sammy के bat इसमें खेलूंगा, which was too long for him because he's not a tall guy. तो उसके लिए हमने देखा उसकी flow ही नहीं हो रही थी. So that's why he could only play a very limited range of shots. And Abdul Rahman is the one who actually caught this. We gave him a normal size bat, and he had an amazing season. I actually got a special bat made from him from England during that time, and I gave it to him. Actually, I went to the factory with Baba Azam bhi tha, Sham Masood bhi tha, so we all went together to get those bats made. When they saw the bat that they had made for Khushdil, both were like, "यार आप ये ना बस ये हमें दे दे." So I'm like, no. I promised मैं उसको बना के दूंगा special bats Khushdil को. So I told him he's very happy कि everyone wanted my bat, मुझे मिल गया. And that's the season he did really well. मैं वो ही bat फिर से बनवा के उसके लिए ले आया हूँ. तो Khushdil, inshallah, I'm giving you all the tools you need to succeed. So you just wait. Please उसका Sammy का bat छोड़ो और इंसान वाला bat इस्तेमाल करो, and you got this. इंशाल्लाह. अच्छा, ये सवाल है just बता दें. एहसानुल्लाह अपडेट है. शफीक एहसानुल्लाह पे बता चुके हैं अली भाई मल्टीपल टाइम्स कि एज ऑफ नाउ उनको जो एडवाइस दी गई है पीसीबी की तरफ से, ही इज नॉट फिट टू प्ले द टूर्नामेंट. अभी तक ऐसे ही अली भाई ऑफिशियली पूरे टूर्नामेंट के लिए वो बाहर है. मेरे यार 3-4 क्वेश्चन फंसे हुए हैं फराज, मुझे तुम दे ही नहीं रहे काफी देर से. बस नहीं तो 3-4 आपने छोटे-छोटे कहता क्वेश्चन. व्यूअर्स की तरफ जाए, मैं तो उठा रहा था क्योंकि आप पूछ नहीं रहे थे. नहीं अब व्यूअर्स के भी हो गया. मैंने कहा 3-4 कर लें और फिर उसके बाद फिर 1-2 व्यूअर और फिर शो को फिनिश कर लेते क्विकली में. वैसे एक क्वेश्चन भी आ रहा है फराज, अगर आप देखोगे मेरा भी क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था कि अली भाई डेविड मलान का आई डोंट थिंक सो कि यू वर श्योर कि आपको डायमंड में मिल जाएगा. देयर वाज हिट और मिस. तो अगर डेविड मिलान ना होते तो आपने कोई और लेफ्ट हैंडर बैटर्स भी टारगेट किए हुए थे, जिस तरह किसी भाई ने भी कमेंट में पूछा भी हुआ था क्या डुप्लाई जो थे आपकी लिस्ट में थे उस तरह. Yeah. So the 4 batters we had looked at was Milan, Jordan Cox, Reza Hendricks, and Deploy. अच्छा, एक और चीज, आई एम रियली हैप्पी कि आपने वैसे ये यार अभी क्या नाम हो गए हैं ये जो वेस्ट इंडीज के कीपर अभी आपने उठाए हैं 19th पिक में, Johnson Charles. Johnson Charles. जॉनसन चार्ल्स, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर. जी बोलिए. Great player. I just want to say that when we were doing the draft now, we were cognizant of the fact that we lack power in our batting. So we had planned that Jesse be a replacement after I game, we pick 2 more players. We have to prioritize power. And Johnson Charles gives us that power. So we are very happy that हमें डर था कि शायद पिक हो जाएगा हमारे से पहले, लेकिन we are very happy कि वो आ गया. So वो पहले 3 गेम के लिए अवेलेबल नहीं होएगा, लेकिन जैसे वो आएगा ना, आके जिस फॉर्म में है ना वो, तो I'm really looking forward to having him, especially for the matches we play in Pindi. तो आप उनको मिडिल ऑर्डर के लिए कंसीडर करेंगे जॉनसन चार्ल्स को या टॉप ऑर्डर के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के लिए उसने मुल्तान के लिए परफॉर्म किया हुआ है. बिल्कुल. It could be both. So it depends on who our top order is. If, for example, we feel that Yasir Khan is doing well, so then we keep him as the opener. Then we play Milan and Riza Mistake, and then Charles in the middle. Or we play him up top. Agar Taib is doing well in the middle for us. So it just depends on where we need to fit, because he can play at 4 and at 1 and at 3. So we're spoiled for choice. अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि बिफोर जॉनसन चार्ल्स पिक वो मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं. आई वाज रियली वरीड कि मुल्तान हिस्टोरिकली जो कि 3, आई नो कि आपने इसका पार्शियल आंसर पहले थोड़ा सा दिया है, मगर मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में पता करना चाह रहा था कि जब आपने ड्राफ्ट किया है आपका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत फॉरेन हैवी वेट होता था. मिलर भी होते थे, टिम डेविड भी होते थे, पोलार्ड भी होते थे. ठीक है. तो इनके होते हुए जब आपने इनको लोकल मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस किया इस दफा, तो वर यू नॉट वरीड कि यार ये इफ्तिखार और खुशदिल और तैयब ताहिर इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस तरह के बड़े-बड़े चेंजेस करना. तो वो तो अच्छा है कि अब ठीक है, आप जॉनसन चार्ल्स को कई बार फिट कर सकते हैं, मगर अगर किसी कॉम्बिनेशन में जॉनसन चार्ल्स नहीं आते तो इन 3 लोकल मिडल ऑर्डर्स के साथ तो वो उस तरह के बड़े-बड़े शायद ना हो सके. कोई इफ्तिखार की भी रिसेंटली कोई फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है. खुशदिल तो सिर्फ लाहौर कलंदर को मारने के लिए पैदा हुआ है, वो तो सिर्फ लाहौर के खिलाफ ही चलता है. तो क्या कहेंगे? नहीं, दिस इज देखिए हमने जब सोचा था ना कि हाउ डू वी गेट
high strike rate players in the middle order, वो कौन है? So as I mentioned, Tayyip Tahir's strike rate against Spain is 150, which is more than enough, more than all the जो गोरे players उनके भी आसपास ही होंगे, because 150 strike rate is your ideal strike rate in the middle for any player. So Tayyip gives us that, so we're more than comfortable with him. उसके अलावा if I agree that Iftikhar isn't in form these days, but again he is the number one finisher in Pakistan. So if he's having a good tournament now, all is well. Abhi, we were looking at Asif Afridi as an example. Okay, do we want to get him because we knew Islamabad is not keeping him in their retentions and that he'd be in the draft. When we looked at the stats, his stats and Khushdil's stats are almost identical in the past 2 years. So अगर आप खुशदिल के बजाय हम आसिफ अली रखते, लोगों को लगता कि नहीं इनका पावर, and they have good power at 5 and 6, but because it's Khushdil, people don't, for some reason, don't value him as much as Asif Ali, even though he has the same stats in the past 2 years, and he can bowl, and he's left-hander, and he's younger, so he's on up, and also obviously Asif Ali is obviously nearing the twilight of his career. So given the fact that he has the same strike rate and the same average, we obviously wanted to keep Khushdil instead. So if you think of, you have Iftikhar Ahmed and Asif Ali equivalent at 5 and 6, and you have a guy who strikes at 150 against spin. If you look at it this way, with the unbiased view, कि Tayyib नाम है इसका, कोई John नाम है इसका, I think हमारा numbers wise हमारा काम पूरा है. It might look a little less sexy, but numbers wise we have a 150 strike rate against spin. Iftikhar Ahmed obviously is amazing strike rate, and Asif Ali equivalent striker at number 6, who can also bowl. So, and again, because we have the flexibility with Tayyip, कि अगर spin नहीं लगी हुई, we can send Iftikhar earlier. Maybe we can send Khushdil earlier. We have Willie and Jordan, इनको पहले भेज सकते हैं अगर जरूरत पड़े. So we have a lot of options because the fact that we bat at either 10 or 11, we have a lot of power to come in. And we, अच्छा एक मैं ये बात बता दूं लोगों को, जब आप टीम बिल्ड कर रहे होते ना, it's not about कि आपका नंबर, आपकी बैटिंग कहाँ खत्म हो रही है और क्या अच्छे प्लेयर हैं क्या प्लेयर हैं. जितनी डीप बैटिंग है ना, जितनी आपकी डीप बैटिंग होती है, उतना आपका टॉप ऑर्डर प्लेयर, मिडिल ऑर्डर प्लेयर बेहतर खेलता है. सो व्हेन यू हैव इफ्तिखार एंड खुर्शीद नंबर 6 and 5 and 6, उनको पता है कि अगले 4 हमारे बैटर मौजूद है. So they can play in a different way, in a different relaxed, confident mindset, knowing that we can take the high risk shots and we can go for it more if they know कि हमारे पास सिर्फ टेल है, फिर वो डिफरेंट खेलेंगे. So we, because of our deep batting, we can give our players more impetus कि आप लोग जाओ और अपने आप को एक्सप्रेस करो, फिक्र नहीं करनी आपने, बहुत बैटिंग आपके पीछे. तो ये हमारा प्लान है विद पावर इन द मिडल. बस 2 छोटे-छोटे और क्वेश्चन है. वो डॉक्टर कामरान ट्विटर से आज उन्होंने आप ही की ट्वीट के नीचे लिखा था, तो मैंने सोचा पूछ लूं. लाइटर नोट के ऊपर क्वेश्चन. वो कह रहे हैं कि जैसे लाहौर आईफोन वगैरह बांटती है प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, तो आप भी कोई उनको आमों के डब्बे देंगे? वो कह रहे हैं एनी प्लान्स फॉर मैंगो बॉक्सेस गलोर फॉर इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस. वैसे सर्दियों में तो आम होते नहीं है. अनफॉर्चुनेटली एवरीवन पाकिस्तान मैंगोज ओनली कम इन द समर, लेकिन अगर विंटर में होते हैं हम जरूर देते हैं. हम यहाँ गुजारा करेंगे सोन हलवा के साथ. सोन हलवा के डब्बे मिलेंगे उनको, बिल्कुल. अच्छा, ये स्टे कूल का एक ये क्वेश्चन वैसे काफी लोगों ने किया है. मैं डरते पूछ रहा हूँ थोड़ा सा आपसे. वो कहते हैं कि आस्क हिम व्हाई दे हैव केप्ट स्पॉन्सर्स लाइक पेप्सी एंड केएफसी व्हेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर बायकॉटिंग दोस प्रोडक्ट्स. जो हम एक जो ऑफिशियल लिस्ट है ऑफ द कंपनीज दैट आर बीइंग बॉयकॉटेड, उसमें केएफसी नहीं है. So हमने चेक किया था पहले, and we showed it to all the players and the agents के KFC is not on the official list. मैं उसका लिस्ट का नाम भूल गया अब क्या है. So we have no issue with KFC. And also KFC is sponsoring PSL, तो PSL के लिए ठीक है, तुम्हारी भी ठीक है. मोहम्मद इमरान का आखिरी ट्विटर से क्वेश्चन था. मेरे ख्याल में आप उसका रिप्लाई कर चुके हैं कि ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी. तो मेरे ख्याल में उसमें तो आप कह चुके हैं कि शायद आप यासिर खान के साथ शायद करेंगे या रीजा एंड्रिक्स ओवर वही है. मगर दूसरे तो ओपनर रिजवान का तो पता ही है, तो रीजा एंड्रिक वर्सेस यासिर खान ही होगा. अगर इट इज लाइकली कि अगर रीजा और मिलान दोनों आएंगे तो वही हमारे 2 and 3 होंगे. लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम यासिर को खिलाएं ऊपर, 3 पे आ जाए मिलान या रीजा, एंड 4 पे आ जाए उस्मान खान, हु इज अगेन एन अमेजिंग प्लेयर ऑफ स्पिन. जी फ्रास, कुछ अगर आप या हसीब आपने कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछने हैं, या यूजर्स के बहुत से अभी भी क्वेश्चंस बहुत से आ रहे हैं जो अनआंसर्ड हैं, एक दो आप ले लो. लेकिन अली भाई को एक मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं. अली भाई जो आप मेरे पीछे लाइट देख रहे हैं ना, ये मैंने खास मुल्तान सुल्तान की जो मेरा जो ऐप थी उसके अंदर उसने वो मैंने शर्ट को ना नाइस so it combined the colors of the shirt and put the light on. यार उन्होंने मुल्तान ने तो ग्रीन निकाल ही दिया अपनी शर्ट से आज. नहीं ग्रीन निकाला नहीं, साइड पे सामने से नजर नहीं आ रहा. ग्रीन है उसमें on the side.
Yeah. हाँ, तो मैंने शर्ट की इमेज डाली उसके अंदर और उसने मुझे फिर ये कॉम्बिनेशन निकाल के अच्छा दिया अच्छा, उसमें से। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो अली भाई, वैसे हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है और Sorry, Saqib Mahmood की बातें आ रही है। Saqib Mahmood is just recovering from an injury, so he hasn't played any tournament yet. So it'd be a big risk to pick him now. That's why हमने उसको पिक नहीं किया. Marushaka wasn't available for the full tournament, तो उसको इसलिए पिक नहीं किया. इबा और क्या का कुछ? सवाल आया आपके लिए, मिसेस क्या? अजहर महमूद, वो कह रही हैं कि योर स्टांस इन रिक्रूटिंग फीमेल कोचेस एंड मैनेजमेंट इज मोन्यूमेंटल, स्टैंड अप ओवेशन फॉर यू। अच्छा, सवाल नहीं है आपके लिए, Thank you, कॉम्प्लीमेंट Abba. था, Thank you, very Comment है, kind. comment. कमेंट था। अच्छा, उसके अलावा लेट्स क्विकली रन थ्रू। अली भाई, फराज कासिम चूना लगा रहा है, ये सबको ऐसे बोलता है। क्योंकि मैंने सबकी शर्ट पे लगाया, हालांकि क्या किया था यार, कलर चेंज। हाँ, तो अच्छी बात है। ये तो नहीं कह रहा कि ये हमेशा ऐसे होता है। वो कह रहा है इस इंटरव्यू के लिए किया है। हाँ. एग्जैक्टली। तो अच्छा, embrace करो यार, embrace happiness. अली भाई से ज़ल्मी टीम का क्यों पूछे हम यार, लाइक व्हाई आस्क। अच्छा, एहसानुल्लाह की रिप्लेसमेंट, वैसे हाँ, एहसानुल्लाह अवेलेबल नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट कौन हो? We're not going to replace him, because if you replace a player, they can't be with your squad. We want to have Sanullah with our physio, Dr. Jav, throughout that whole month, ताकि उनकी हम अच्छा, rehab करें, उनकी हम फिजियोथेरेपी करें, उनका हम स्ट्रेंथनिंग करें। अभी जब उन्होंने देखा था उनको, उन्होंने कहा था कि इसकी कोई एसेंसी नहीं हो रही, इसकी टांगे कमजोर हैं, कंधा कमजोर है, ये कमजोर है. So we are going to give him as much support and care that we can for this month. So we are ओके, not replacing. And luckily, as everyone knows, we have a lot of fast bowlers in our squad. तो हम उससे गुजारा करेंगे, but we're not going to replace Sanullah. He'll be with us throughout. दैट्स गुड टू नो, क्योंकि मैंने जैसे आपको उसी वक्त मैंने पहले बोला कि जब हमने इसकी पहले तस्वीरें वीडियोस देखी थी, वो इतने बड़े कास्ट वगैरह में था, वो काफी इसमें था। उसके बाद से देखा कि वो उसने बॉलिंग करना शुरू कर दी, बल्कि पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट हो रहा था, उससे पहले वर्ल्ड कप था या उससे पहले उसने वीडियोस डालना शुरू की, तो लोग कह रहे हैं कि देखो इससे डाल रहा है कि उसको टीम वो इतना दिमागी तौर पे मासूम। मुझे एक वो Yeah, जर्नलिस्ट हैं आमिर मलिक फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने इंटरव्यू किया, तो वो जब उन्होंने इंटरव्यू कहते फराज, मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना मासूम है। मैंने कहा, for sure, for sure. लगता But है by the कि way, people who know anyone in cricket in Pakistan, cricketers love sending voice notes. ठीक है, कोई मैसेज नहीं भेजता, सिर्फ आपको आते हैं voice notes. ठीक है, आपको 5-6 इकट्ठे आते हैं, 5-6 सेकंड के. But no one sends more voice notes in Pakistan cricket than Sanullah. So वो उसकी वजह है ना, वॉइस नोट के स्क्रीनशॉट नहीं लग जाते. स्क्रीनशॉट है नहीं है, टेक्सटिंग इज नॉट रियली देयर थिंग, बट जो वॉइस नोट्स आते हैं ना फ्रॉम क्रिकेट प्लेयर्स, वो सारे पीछे छोड़ जाते हैं सानुल्लाह. ही इज द मास्टर ऑफ वॉइस नोट्स. लगता भी है। अच्छा, एंडी फ्लावर का सवाल आया था, लेकिन आई डोंट थिंक एंडी फ्लावर, आप फिर अपनी जबान से आंसर कर दें इसको। Andy Flower, as long as it's this, because he has a gig with the IL20 and then IPL. As long as IPL PSL is between these two, it is unlikely he'll be able to find the time and be able to be away from the home for 6 months together at this stage. So maybe if it's a different window, could happen. ठीक है जी। अच्छा, लास्टली, ओके, Sorry. This I really want to talk about this. Kyle Mayers. इतनी उसकी बात हुई है in every mock draft, in every कहानी. draft को पिक नहीं किया. हमने उसकी बहुत बात की हुई थी. We was very interested. तो बहुत लोगों ने इसके बात की है. मैं इस पे डेफिनेटली बात करना चाह रहा था. Basically, Kyle Mayers ना, उसकी बहुत खूबियां, very explosive, super good against pace. हमने थोड़ा again deep dive किया उस पे in with Crickviz and Freddie and everyone. Against left arm spin early on, उसकी काफी वो स्टैट्स थे. मैं जाके उर्दू में बोल रहा था, उसका एजेंट मुझे सुना करे, लेकिन उसके स्टैट्स उतने अच्छे नहीं थे. और क्योंकि पाकिस्तान में ये काफी होता रहता है कि लेफ्ट आर्म स्पिन अवेलेबल होगी आपको, तो उसका एक इशू था. और दूसरा वैसे बता दूं कि हम जब सोचे थे कि who's an ideal opening partner for Rizwan, because देखो Rizwan is our main guy, so we're kind of building the power play and batting team around him. So हमने देखा who would be an ideal batter to complement Rizwan. One would be someone who obviously has a very high strike rate. Like for example, take Sharjeel for example. हमारे से एक हमारे ग्रुप में ये सवाल आया था कि Sharjeel is in really good form, having अभी domestic में, तो क्या thoughts है उसके? Even though he has a great strike rate and can hit sixes for fun, main issue here, he will make Rizwan worse because he is not as good of a runner as Rizwan. Rizwan needs to take those quick singles, those quick doubles. That's how he plays in the beginning. Obviously, boundaries bhi karta, but he needs someone who can keep up with him. And that's why we thought कि Riza would be a great way, not only कि वो भी अच्छा player, obviously world beater है वो, but also he will make Rizwan better as well. तो एक और एक 11 वाली बात है.
तो नॉट ओनली कि रीजा आके अपनी गेम खेल रहा है, बट ही विल मेक रिजवान बेटर आल्सो. सो ये कॉम्बिनेशन है ना कि दे विल फीड ऑफ ईच अदर. दैट्स व्हाट वी वांट. दैट्स अनदर रीजन व्हाई वी वेंट विद रीजा. इवन दो रीजा के आजकल बुरी फॉर्म है, स्लो खेल रहा है. हमने अब इस पे अभी फिर से बात की थी इसके ऊपर कि यार हम ये बड़ा स्लो खेल रहा है, तो क्या सीन है कि हम ये क्या करें अब हम अगर ये ऐसे खेलेगा. जब नेथन से बात की, उसने कहा देखो मुझे नहीं पता कि इसको कौन सा क्या रोल दिया गया है अपने टीम से, अपने कैप्टन से, अपने कोच से. हर किसी को डिफरेंट रोल मिलता है. मुझे सिर्फ ये पता है, नेथन कह रहा था, कि जब ये हमारे खिलाफ आया था इंग्लैंड, ही टुक ऑल आवर बॉलर्स अपार्ट. जो भी हम प्लान करते थे खिलाफ, there was nothing we could do, and he took apart every bowler we had at a very high strike rate all over the ground. So he's a world class player, and when we give him the clarity that this is you are the accelerator in this partnership, this is your role, he will, they have no doubt he'll be able to play this role. तो तब हमें थोड़ी तसल्ली मिली और फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो गए, पर हम भी थोड़ा परेशान थे कि अब इसकी फॉर्म तो काफी स्लो है. पर हमें नेथन ने कह दिया कि आप भाई फिक्र ये आया है, अब ये पता नहीं आपके लिए आया कि मेरे लिए आया, क्योंकि मैंने तो ये बोला था, आपने मुझे नहीं पता ये कब बोला होगा. क्योंकि मैं हाँ देखें, हर कोई गुनाह करता है और मैंने डेफिनेटली बोला था, बट टू माय डिफेंस, दिस इज व्हेन ही वाज इन कराची किंग्स, एंड आई ब्लेम कराची किंग्स फॉर मेकिंग अस थिंक रिजवान नॉट टी20 प्लेयर. तो हम तो विक्टिम्स हैं, बिकॉज कराची ने हमें बताया हुआ था कि देखो ये टी20 बैटर नहीं है. तो जिसको ब्लेम करना ना, आप ब्लेम करो कराची को. हम तो बस देख रहे थे, हम तो बस सुन रहे थे कि क्या हो रहा है. नहीं तो मैं भी मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने तो रिजवान को काफी क्रिटिसाइज किया था उस जमाने में भी, लाइक जब इवन आफ्टर ही मेड इट टू द नेशनल टीम. सो आई एम जस्ट ग्लैड टू बी प्रूवन रॉन्ग in that aspect. By the way, I think it was when he played again. Yeah, it was a good time when we had those cricket associations or high-level domestic tournaments. होते थे. That's when Rizwan, captain KP, came in as an opener and then was and won that tournament. That's when people started thinking कि actually the opener है, and he's a very effective opener. That's when he made his, you know, change people's mind कि I can play T20 really well. अच्छा, आपको ऑप्शन दिए एक फैक्ट हमारे व्यूअर ने, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफीज और फजल हक रिप्लेस. If all they were all available, I would go with Fazal Haq Farooqi. Lefty, very wily cricketer. इतना समझदार है, इतना समझदार. If you look at him closely, the choice of field placement he takes, the kind of bowling he does, he is such an intelligent cricketer. It is just amazing to see. So I would definitely pick Fazal Haq Farooqi. यार ये क्वेश्चन अच्छा है कि पूछ लिया. हमने पिछले साल की बात ही नहीं की वैसे, टू बी ऑनेस्ट. वैसे आप पिछले साल तो आई गेस नॉट ऑफिशियली मुल्तान सुल्तान के साथ है, मगर ऑफ कोर्स आपके चचा की टीम थी, आप तो सारे मैचेस देखते ही होंगे. हाउ मच is Multan Sultan hurt with the last year defeat in the final of HBL PSL 8, देखिए, and how were you all feeling during the moment? I can't really speak for everyone because I have a very different way of watching cricket, and generally जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज मेरी अपनी चल रही होती है, I have a different way of doing it. I generally try to stay positive because how can, if I would be unhappy if we did something bad, या हम कुछ बुरा करते या कोई गलत डिसीजन हम ले लेते with the team, maybe I'd feel bad. How can I feel bad when I saw the greatest T20 innings and move I've ever seen, कि शाहीन शाह अफरीदी as captain walked down the dressing room, bat in hand, helmet पकड़ के, और विसा उसको देख रहा था कि भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं. He came out and just destroyed Ihsanullah, who was unplayable at the time. Ihsanullah के अगर आप देखते उसकी वीडियो, he had no idea what to do because he was unplayable. वो लोग को देता था 2-3 रन पर ओवर, and Shaheen came out all guns blazing, fearlessly उसने उसको demolish कर दिया हमारे बॉलर को. उसकी वजह से बाकी बॉलर भी बेचारे वो demoralize हो गए थे. How can anyone be upset after seeing this incredible performance by Shaheen? I was definitely not upset. बाकी हो सकता है मैंने मेरे उस like this is the greatest innings I've ever seen. So how मैंने how उस इनिंग को, अली भाई, मैंने उस इनिंग को नाम दिया था लाइक एक फीवर ड्रीम बेसिकली, लाइक yeah, exactly, perfect description. It was just not we will never see something like that again. It was just, and the optics, वो खुद भागा भागा नीचे आ रहा था. उस लोग उसको देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब आपस में भी इनका प्लान भी नहीं था. It was just one guy who like, I'm just going to grab this game by the scruff of the neck and I am going to win us the game. याद है जब हमारा when Multan Sultan won the final against Zalmi, and you had that amazing moment with the जो spiral cam होता है, we went to Shoaib Malik and he said, I'm here to I'm a finisher and I'm going to finish it. Even then I was like, यार दिल में मुझे लग रहा है कि अगर ये कर लेगा ना, बहुत मजा आएगा, बहुत बड़ी बात होगी. चलो, he didn't do it, but I love these moments when an athlete says, I got this. So I have no issue with the last defeat.
I loved every moment of that के game. अंदर और लाहौर के अंदर तो आपकी फेवरेट टीम भी है. I will watch it. I watch the highlights, ignoring ke Multan lost, but just that walking from the tunnel down the stairs, Shaheen ka visuals now, too good, too good. अच्छा यार चले on this note अली भाई will 2 घंटे almost हो गए, so we're going to firstly thank you for being so generous with your time. तो और 2 घंटे पूरे होने लगे. आई नो आप वैसे काफी बिजी इंसान हैं, आपकी अभी अगली रिप्लेसमेंट कॉल भी अभी होने लगी होगी Zoom पे. So No. I'm always happy to talk cricket. Obviously, it's one of the things that I love talking about the most. And I'm a big fan of Velu Kate, so I'm always listening to your videos in my spare time. So I'm again always a pleasure. Whenever you guys need me, I'm here. Whether it's for a big interview, small interview, I'm always available for you guys. Livi, thank you so much. अच्छा आप शो एंड करने के बाद आप 2 सेकंड रुकिएगा जरूर जाने से. Don't log off right away. But for our viewers, this was Ali Tareen, back in charge of Multan Sultan. उनके बहुत बड़े प्लान हैं. As Multan fans आप ये जरूर ज़हन में रखिएगा. अली भाई ने इस बात पे elaborate किया कि it's a restart. So it's a restart. काफी चीजें नई होंगी, काफी चीजें मुख्तलिफ भी होंगी. शायद वो तो एक्सपेक्टेशंस को जो है वो टेम्पर करना जरूरी है. बहरहाल शो देखने का बहुत शुक्रिया. माजरत उन लोगों से जिनके सवालात नहीं ले सके. काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सवालात भी आए थे. कोशिश की हमने जितने इनकॉर्पोरेट कर सके. कुछ जो जवाब नहीं दिए उनके, क्योंकि अली भाई ऑलरेडी जवाब दे चुके थे, तो आप अगर पीछे शो दोबारा देखेंगे तो you'll be able to see those answers. Yeah, feel free to tag me. I'll be happy to answer your questions. ठीक है जी, देख ले. तो अली भाई को आप टैग कर सकते हैं. ही विल आंसर योर क्वेश्चंस. एंड साकिब भाई, हसीब, कानी जा चुके हैं. एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड हमारा PSL जैसे करीब आता जाएगा, शोज की जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी. आपको इंटरव्यूज एनालिसिस अब तो आई थिंक इंटरव्यू एक सबसे ज्यादा जो डिमांड में इंटरव्यू, वो साकिब भाई आपको ट्विटर पर अपडेट दे देंगे वो कब होने वाला है. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रिलू कट्टे फॉर एवरीथिंग PSL. अल्लाह हाफिज. Hafiz. Yes.